चलो. Now, before I begin with anything, I hope you all have been following the Institute website. And good morning once again. Uh, Before we do anything, I want to very quickly discuss the paper, and for a reason, and I'll tell you the reason why. When you look at your original paper, like these are the mock test papers that were there initially, and this was the pattern in which they have asked your current exam also. Current exam इसी pattern में हुआ था, correct? Where MCQs पूछे गए थे 8. That was the first thing that you did, that you saw. 8 MCQs, 1 mark each, was 8 marks. Then there was fill in the blanks. 4, 1 mark each. Then there was true or false, 3, 1 mark each. So that's 7 and 8, 15 marks in objectives. Correct? Then you move on to your descriptive questions. So जैसे पहले था वैसे ही है. There is a 2A and B, then there is a 3A and B, then there is a 4A and B, and then there is a 5A and B. अब इनमें 2AB is a practical question. If you look at 3A and B, they are again practical questions. Then when you look at, 3A is a theory question, B is a practical question. Then there is 4A, which is a theory, 4B, which is a practical. And then you have 5A and B, which are both practical questions. So that's practical and practical, which is sums. Eventually क्या है? Eventually, 3 questions हमें लिखने हैं, which is going to be 1, 2, and फिर इन दोनों में से कोई एक. Marking scheme अब हो चुकी है 15, 15 and 15. So 15 3s is 45. ये 45 in practical, 15 in theory is a total of 60 marks. अब इसके बाद चालू हो जाता है SM. अब हुआ क्या है? I was not going to discuss this, but why I'm discussing this is, have you all checked the Institute website recently? Has anyone checked the Institute website recently? Check किया किसी ने? This has been released by the Institute. Has anybody seen this? And exactly why is I am discussing the paper. देखो, ये ना सिलेबस 2022 के लिए रिलीज किया गया था. बस उतना ही लिखा था, syllabus 2022. Now they've released something called as an MTP, but now they don't call it a mock test paper. They call it a model question paper. तो MQP बन गया. उसमें ना very specifically they said term December 23. मतलब अपना वाला term. Syllabus 2022. मतलब अपना वाला syllabus. And paper pattern change कर दिया. And I want to discuss क्या change किया है. अपने पेपर पैटर्न में क्या था? अपने पेपर पैटर्न में 8 MCQs, 4 fill in the blanks and 3 true or false. उसके बाद 3 questions, 15 marks each, 45. तो ये 15 और ये 45, 60 done. In this new paper that they've released, ये वापस उल्टा लॉकडाउन वाले फेज में चले गए. सी नाउ
Very honestly, don't know. Is this a mistake that they've made, or they want this new paper pattern? But I want you to look at it and understand कि वैसे खास कुछ चेंज नहीं हो. क्यों बताता हूँ. उन्होंने सेक्शन ए में ना 15 एमसीक्यूज डाल दिए. अपने 8 थे, अब 15 आए कहां से बताता हूँ. 15 एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क इधर ही गया. करेक्ट. अब वैसे देखने जाओगे 30 मार्क इधर गया, तो एम का बचा कितना, 30 मार्क. तो सिर्फ 30 मार्क में व्हाट डू दे डू, आई टेल यू. बचे हुए में अगेन देयर इज अ 2ab, 3ab, 4ab, एंड इफ यू नोटिस 2ab, 3ab, 4ab, 5ab. 2ab, if you notice, are both theory questions. 3a is theory, 3b is practical, 4a is practical, assignment problem का question है, 4b is practical, सब देख लेते हैं. 5a is practical, 5b is practical. तो ये हुआ practical, practical, practical and practical. अब वही है. अब यहाँ पे आंसर करने जाओगे तो ऑब्वियसली ये 3 आंसर करोगे. तो अब ये 3 में ये दोनों मिलके विच इज 7 और ये 7, 14 मार्क कर दिया है. इफ यू नोटिस 7 मार्क्स हियर, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम इन 7 मार्क्स हियर. 5ab में 7 7 14 कर दिया है. तो दे हैव चेंज्ड दिस टू नॉट 15 मार्क्स. 3ab भी देखोगे ना तो ये 7 और ये 7, 14 मार्क कर दिया है. तो दे हैव मेड इट 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, which is 4 3s is 12 and 3 1s is 3, 42 मार्क्स. जिस 42 में ऑब्वियसली आप ये एक साथ नहीं लिख पाओगे क्योंकि थियरी है. नहीं लिख पाओगे मतलब ऑब्वियसली लिख पाओगे, आई हैव गिवन यू द शीट, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो थियरी है तो मैं वो काउंट नहीं कर रहा. तो 35 मार्क हो गया. तो डू यू नोटिस दे हैव रिड्यूस्ड द मार्किंग फ्रॉम व्हाट इट वाज टू व्हाट इट इज राइट नाउ. बट माय क्वेश्चन इज, अगर 30 मार्क आपने एमसीक्यू में पूछ लिया तो 35 मार्क प्रैक्टिकल में कैसे पूछ सकते हो? हाउ कैन यू क्रॉस द 65 मार्जिन? They've crossed the 65 margin because if you notice they have continued the paper into SM. पेपर रुका नहीं. There is no bifurcation between OM and SM. सीधा यहां से SM चालू हो गया. तो जो 15 MCQ दिख रहा है ना आपको, वो पूरे 15 OM नहीं है. आधे OM है, आधे SM है. Because of which you see that difference. तो उसमें से 9 OM है एंड बाकी बचे हुए 6 SM, जिसकी वजह से 9 OM के 18 मार्क होते हैं, प्लस योर 42 इन डिस्क्रिप्टिव इज अ टोटल ऑफ 60 मार्क्स. बचे हुए 6 SM के 12 मार्क, एंड फिर ये बचे हुए 6AB 7 मार्क, 7AB, 8A एंड B which is 7 मार्क. ये करके they have made a total of 7 2s are 14, 14 plus 14 is 28, 28 plus ये शायद ये नहीं किया है, मार्क नहीं किया है, डबल लिख दिया शायद. So that is going to be a total of 28, which is going to be your 0 and 4, 40 marks. Answer any 5 questions out of the 7 questions given below. तो if you ask me ये फायदा है. कोई भी 5 आंसर करने आउट ऑफ द 7, तो टोटल 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 7 में से यू हैव टू आंसर एनी 5. तो आप SM, अब OM SM में भी ऑप्शंस है, तो आप SM लिखना है SM लिख दो, OM लिखना है OM लिख दो. तो वैसे देखने जाओगे तो नॉट मच हैज चेंज्ड. इट्स जस्ट दैट द पेपर हैज बीन मर्ज्ड टुगेदर. That's the only difference. So I wanted to discuss this because this is a stark change from what they have released originally, and originally इसी पैटर्न में एग्जाम भी हमने पेपर्स डिस्कस किए थे after we finish each and every chapter, and we've seen that originally यही पैटर्न में एग्जाम पूछा गया है लास्ट 2 अटेम्प्ट.
in the 2022 syllabus. I don't know why they have released this paper. Is that a mistake on their end, or are they actually going to make that change? That is completely uh, now up to them. अब तभी पता चलेगा. But you don't need to panic. Objectives MCQ में change हो गए हैं, तो true or false भी MCQ हो गया है, fill in the blanks भी MCQ हो गया है. That doesn't matter. So I want you to be prepared for both, because with your institute you never know. So make sure you are prepared for both kinds of papers. Well, वैसे prepare होने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, but just be ready for both kinds of papers, ताकि later you are not pleasantly or unpleasantly surprised with whatever changes there are. Is this clear to everyone? Chalo. With this, let us start with now topics. Now I want to do this in the order of कौन सा chapter ज्यादा weightage लेता है. तो everybody has their past paper discussions का table in front of them. If they do, please pull it out very quickly and tell me what is the first paper that has been asked, what is the first topic that has been asked for maximum marks. पहला topic क्या बता देंगे for maximum marks? We've written down the total. Correct? The first topic that you see is the three topics merged together, and that is capacity, productivity, and time and motion. अब ये दिखता ज्यादा है. I'll tell you for two reasons. क्योंकि पहले ना, if you remember, I had told you, तीनों में बहुत फर्क था. तीनों में there was a stark bifurcation. अब क्या हो गया है नए वाले सिलेबस में, इसका टॉपिक इसमें घुस रहा है, इसका टॉपिक इसमें घुस रहा है. इसीलिए आप तीनों क्वेश्चंस में एक क्लियर डिमार्केशन नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैज हैपेंड इज, तीनों को क्लब कर दोगे ना, तो हर एक पेपर में तीनों मिला के आपको एक आध क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा कंपल्सरी. एंड दैट इज व्हाई दैट इज द फर्स्ट टॉपिक that you will see for the most maximum marks out of all the topics that we have done. So what I'm going to do now is I'm very quickly going to do a few questions that have been done by them, but that have been asked by them in the past couple of attempts, so that we are done with one topic. Very quickly then, one question that has been seen quite a few times is, just give me 1 second.
आ जाओ. One very typical question that has been asked over the attempts that we've seen. A department works 8-hour shift for 250 days a year and has the usage of a machine as given below. XYZ 3 machines हैं. आपको X पे 300 यूनिट बनाना है, Y पे 400 एंड Z पे 500. X बनाने के लिए 4 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम है, Y बनाने के लिए 6 एंड Z बनाने के लिए 3. If you are going to write, I would suggest start writing with me. If you have a suggestion with you, fantastic. But if you are going to write, I would suggest start writing with me. We want to dedicate less time to writing stuff down and more time to doing. तो इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है आपको? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन्स. तो अज्यूम ये किया गया है कि एक ही टाइप की मशीन है जिसपे आपको ये तीनों काम करने हैं. तो आपको ये बताना है कि अगर ये काम फुलफिल करना है तो मुझे कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी. तो अगर ये काम फुलफिल करना है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट दो चीजें, व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट. व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं एक मशीन खरीद लूं तो वो एक मशीन 250 दिन चल सकती है एक साल में. उन 250 दिनों में वो रोज 8 घंटा चलेगी. तो इट इज गोइंग टू बी अ टोटल ऑफ 250 इंटू आपको पूरे साल में 2000 मशीन आवर्स मिलेंगे. व्हाट डू यू वांट? वेल, आई वांट टू मेक 3 प्रोडक्ट्स. एक जिसका डिमांड 300 है, दूसरा 400 एंड तीसरा 500. ये 300 यूनिट बनाने के लिए 4 घंटा लगेगा, विच इज 1200. ये 400 यूनिट बनाने के लिए 6 घंटा लगेगा, विच इज 2400. एंड लास्टली ये 500 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटा लगेगा, विच इज 1500. मुझे जरूरत है 1200 प्लस 2400 प्लस 1500 की, which is a total of 005911, and this is going to be 5100 machine hours की. Well, obviously एक मशीन से ये होना नहीं है, तो आई एम गोइंग टू से एक मशीन से यू गेट 2000 मशीन आवर्स. तो मैं कितनी मशीन्स खरीदूं जिससे मुझे 5100 machine hours मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई and you will get the number of machines is 5100 into 1 upon 2000. So X is 5100 divided by 2000, which is 2.55, which is approximately 3 machines. And obviously, I'm not going to pay much attention to the presentation per se. You all have the presentation with you. I'm going to focus more on solving the questions. So this is what you do in this question. Anybody who wants to write, please make sure that you are quick on the writing. Like I said, I'm not going to wait much on the writing. One in the chat box if anybody still needs time. One in the chat box if you still need time. Perfect. Moving on. The second kind of a question that has been asked, and that is, how do you tell me how efficient is your labor and how utilized is your plant? इसमें दो चीजें पूछते हैं, आपके एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एंड आपके प्लांट का यूटिलाइजेशन. इसके लिए, इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास 3 चीजें होनी जरूरी है. नंबर 1 डिजाइन, नंबर 2 इफेक्टिव, एंड नंबर 3 actual. What does that mean? A steel plant was designed for 50,000 tons of steel per day.
तो आपने डिजाइन बनाई थी 50,000 टन के लिए, हैज एन इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 40,000 टन। इफेक्टिवली मिलना कितना चाहिए? 40,000 टन, एंड एन एक्चुअल आउटपुट ऑफ 36,000 tons per day. Compute the efficiency of the plant and its utilization. आपको प्लांट की एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन चेक करनी है. अंडरस्टैंड द टू थिंग्स. एफिशिएंसी इज आपके लेबर कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं. यूटिलाइजेशन इज आपका प्लांट कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो. एंड दिस इज हाउ इट इज रेड. आपने डिजाइन बनाई 50,000 यूनिट के लिए, तो कैन यू एक्सपेक्ट योर एम्प्लॉइज टू गिव यू एन आउटपुट ऑफ 50,000? नो. व्हाई? बिकॉज मिलता ही नहीं है किसी को 50,000. इफेक्टिवली सिर्फ 40,000 मिलता है. वो तो कंपनी जो बनाती है वो बनाने के लिए बोल देती है कि 50,000 मिलेगा, पर इफेक्टिवली मिलता कितना है? 40,000. Then is it fair on your part to ask them for an output of 40? Yes, that is fair on your part. 50,000 नहीं मांग सकते, 40 मांग सकते हो. But what are they giving you? They are giving you only 36,000. तो आपका एम्प्लॉई पूल एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा. तो अगर उनके एफिशिएंसी की बात करो तो दे आर ओनली 36,000 यूनिट्स एफिशिएंट against the 40,000 that they should give me, which is nothing else but 3600. I'll start my calculator as well. 3600 divided by 40 multiplied by 100 is 90% efficiency, which means they are wasting around 10% of your resources. Let's come to utilization. Utilization is on you and not your employees. आप आपका प्लान कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो. वेल, यूटिलाइजेशन की बात करो तो मुझे भी मिल रहा सिर्फ 36,000 है. हाँ, पर मैंने खरीदा कितना था? मैंने खरीदा 50,000 कैपेसिटी था, और मिल रहा कितना है? ओनली 50,000. देन इट्स ऑन यू टू फाइंड आउट कहां प्रॉब्लम हो रहा है. व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग, जिसकी वजह से आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजायर. दैट्स 36,000 by 50,000 multiplied by 100, which is 72%. Correct? Very quickly, start writing down. In the meantime, anyone has any questions, feel free to drop them in the chat box. One in the chat box if anybody still needs time. Type 1 in the chat box if anybody still needs time. The next kind of a question that has been asked over the years is bottleneck. Exactly same question पूछा जाता है. Exactly 3 questions पूछे जाते हैं इसमें. A firm has 4 workstations A, B, C, D in series. In series is very important. Why? Because इसका मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है. तो जब तक पीछे वाला बंदा काम खत्म नहीं कर लेता, आगे वाला बंदा काम चालू नहीं कर सकता. इन सीरीज एज शोन इन द फिगर, रॉ मटेरियल ए में जाता है, ए का आउटपुट बी का इनपुट, बी का आउटपुट सी का इनपुट, सी का आउटपुट डी का इनपुट, डी का आउटपुट इज द एक्चुअल आउटपुट. What do you want? Identify the bottleneck center. What do you mean by bottleneck center? हर एक बंदा अपनी तरफ से एक certain number of units produce कर रहा है. Problem is C सिर्फ 340 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकता है. प्रॉब्लम क्या होता है उसकी वजह से?
उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगा कि ए 380 यूनिट प्रोसेस कर देगा, बी कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बी की कैपेसिटी नहीं है 380 की, तो बी कितना प्रोड्यूस करेगा? 360। तो 380 का आउटपुट निकलना है नहीं, आउटपुट निकलेगा 360 का। सी 360 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सी की कैपेसिटी सिर्फ 340 की है, तो बी का आउटपुट भी एक्चुअली निकलने वाला है नहीं, 340 ही निकलेगा। ये 340 यूनिट डी के पास जाएंगे। कैन डी प्रोड्यूस 340 यूनिट्स? यस। भले उसकी कैपेसिटी 400 है, पर वो प्रोसेस सिर्फ 340 करेगा, क्योंकि सिर्फ 340 सी से डी की तरफ आएंगे। So the first question is identify the bottleneck. The bottleneck center is C. और remember that bottleneck center वो होता है that has the least processing power. सबसे कम processing power किसकी है? C की, and hence C is the bottleneck center. Question number 2. Question number 2 is what is the system's capacity? Well, obviously जो bottleneck है वही system की capacity decide करता है. If the bottleneck is of 340 units, then the system capacity is 340 units. What is the system efficiency? अब efficiency क्यों पूछ रहे हैं? Well, efficiency इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि technically 340 unit is the least that you can produce. तो वो तो that becomes your maximum production in that case. मतलब ज्यादा से ज्यादा 340 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकता हूं, बट कहना से कम 340 भी आना ही चाहिए। बट आपका एक्चुअल आउटपुट कितने का आता है? 300 यूनिट का, तो कुछ गलत है। व्हाट डू यू मीन? व्हाट आई मीन इज दैट अगर कम से कम 340 यूनिट बनता है तो 340 यूनिट दो। मैं 400 नहीं मांग रहा, मैं 380 नहीं मांग रहा, मैं 360 नहीं मांग रहा, मैं जो सबसे कम है वही मांग रहा हूँ, विच इज द लॉजिकल थिंग टू आस्क फॉर। पर वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। यू आर ओनली गिविंग मी 300 यूनिट्स इन आउटपुट, which means my system is not working efficiently. So efficiency is going to be the 300 out of the 340 into 100, which is going to be 300 divided by 340 into 100, which is 88.23% efficient. Write that down quickly. Any questions you have in the meantime, ask. One in the chat box if anybody still needs time. Any doubts you have, please drop them in the chat box. One in the chat box if anybody still needs time. Fine then, let's very quickly continue. अब उन्होंने क्या किया है? After this, it has been the same section goes back into your, I think, third or fourth unit, जहाँ पे वापस capacity repeat हुआ है, similar kind of questions repeat हुए हैं. So those we are definitely not going to touch upon. We are going to do questions that are slightly different. So now we are going to enter into, ये productivity था. Now we are going to enter into productivity, but of a slightly different type.
This is one question that has been asked over the years. आई थिंक 2 बार पूछा गया था, जिसका इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन थोड़ा सा गलत है. एनीवे, मूविंग ऑन टू द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अ मशीन इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. आज वर्क पर डे 8, वर्किंग डेज पर मंथ 25. एक ऑपरेटर है आपके पास. स्टैंडर्ड टाइम मिनट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. मशीन टाइम 22 मिनट, operator time 8 minutes, so a total of 30 minutes. If the plant is operated at 75% efficiency, operator is working at 100% efficiency. What does that mean? अगर ऑपरेटर 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है ना, तो जो स्टैंडर्ड है वही लगेगा. 30 मिनट 30 मिनट, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिक्वायर. व्हाट इज द आउटपुट पर मंथ? तो अगर आउटपुट पर मंथ पूछोगे, टू बिगिन विद, एक महीने में मेरे पास है कितना? 1 मंथ में आपको मिलता है 8 hours per day for 25 days, which is a total of 25 fours as 100, so 200 hours. बट ये मिनट्स में चल रहा है, तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं. 6 2s are 12, तो ये बन जाता है 12,000 minutes. So that's 200 into 60, which is 12,000 minutes है आपके पास. इन 12,000 मिनट्स में जो बना रहे हो, वो बनाने के लिए 30 मिनट्स लगता है. स्टैंडर्ड गिवन टू यू इज 30 मिनट्स. देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स इज 12,000 डिवाइडेड बाय 30, which is going to be 12,000 divided by 30 is 400 units. 400 यूनिट. बट प्रॉब्लम यह है कि पूरा प्लांट 100% एफिशिएंसी पे नहीं चल रहा. ऑपरेटर अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, बट इट इज अ सिस्टम. अब पूरा प्लांट अच्छे से काम करेगा तो आउटपुट निकलेगा. पूरा प्लांट आपको 400 यूनिट का आउटपुट निकालने देगा नहीं, क्योंकि प्लांट सिर्फ 75% एफिशिएंट है. अगर प्लांट सिर्फ 75% एफिशिएंट है, तो अकॉर्डिंग टू 75% एफिशिएंसी, output is going to be 75% of 400, which is 75 into 4 will be 300 if I'm correct. 300 units. ये पहला पार्ट था. Second part, if the machine productivity is increased by 10%, what will be the output per month? अब देखो फिलहाल क्या हो रहा है, मशीन यूज कर रही है 22 मिनट्स एंड ऑपरेटर यूज कर रहा है 8 minutes. Now you need to understand this and understand this well. I'm going to write down before and अब होगा क्या after. मशीन के लिए MACH लिख देता हूं, मैन के लिए MAN. पहले मशीन 22 मिनट लेती थी, आदमी 8. आप क्या बोल रहे हो? The machine productivity is increased by 10%. Machine is 10% more productive. कैसे? आपने कुछ चेंजेस किए होंगे जिसकी वजह से यू रियलाइज कह रहे अब जो हो रहा है वो ज्यादा प्रोडक्टिवली हो रहा है. तो अंडरस्टैंड दैट मैन में कोई चेंज नहीं है, वो 8 ही मिनट ले रहा है. मशीन में चेंज है. मशीन में क्या चेंज है? इज द मशीन बिकमिंग बेटर और वर्स? ऑब्वियसली इट्स बिकमिंग बेटर. सो अंडरस्टैंड दैट इफ द मशीन इज बिकमिंग बेटर, टाइम टेकन विल बी लेस. अगर मशीन अच्छा काम कर रही है तो टाइम को डिफ्लेट करना पड़ेगा. कितने से? 10% से. So understand that inflating in your calculator is plus 10%. Deflating is not minus 10%. Inflating का reverse is not minus 10%. Inflating is you multiply by 110%. Deflating is you divide by 110%. तो इसी 22 को आप मल्टीप्लाई करते हो 100 अपॉन 100 से. Where you ask yourself करना क्या है? टाइम को बढ़ाना है, कम करना है? टाइम को कम करना है. कितने से? 10% से. तो अगर 10% से कम करना है ना, तो डिनोमिनेटर को हैवी कर दो, which is going to be 22 into 100 upon 110, which is going to be 20 minutes. तो अब नया टाइम हो जाएगा ये 20 और ये 8, 28 मिनट. विद 28 मिनट
पर यूनिट, एंड आपके पास है 12,000 यूनिट, 12,000 मिनट्स. सो नंबर ऑफ यूनिट्स इज 12,000 divided by 28 is going to be 12,000 divided by 28, which is 428.5, which is approximately 426, 428, sorry, 429 units. करेक्ट. नाउ मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया, आगे जाके इस पे भी 75% लगाया, विच आई थिंक इज इनकरेक्ट. जरूरत नहीं, इट्स अ सब क्वेश्चन. इफ दिस 75 वाज इन द मेन क्वेश्चन तो बात अलग थी, सब क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, इफ द ऑपरेटर एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड बाय 20%, क्या हो रहा है, ऑपरेटर 20% खराब हो गया है. तो कैन आई से अगेन देयर इज अ बिफोर एंड एन आफ्टर सिचुएशन हैपनिंग. अब इसमें क्या है, इसमें मशीन में कोई चेंज नहीं है, तो वी विल टेक द ओरिजिनल टाइम ऑफ द मशीन एंड कीप इट एज एन हाउ इट इज. देयर इज अ बिफोर एंड नाउ वी हैव टू जज द आफ्टर. चेंज ऑपरेटर में हो रहा है. द मशीन इज नॉट चेंजिंग, वो 22 मिनट ही ले रही है. व्हाट अबाउट द मैन? द मैन इज बिकमिंग लेस एफिशिएंट, रिड्यूस्ड बाय 20%. एफिशिएंसी कम हो रही है. अंडरस्टैंड, एफिशिएंसी कम हो रही है तो टाइम बढ़ेगा. तो अगर टाइम बढ़ेगा तो टाइम को इन्फ्लेट करना पड़ेगा वापस, 100/100. आस्क योरसेल्फ, बढ़ाना है, बढ़ाना है. क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी कम हो रही है तो टाइम बढ़ता है. टाइम बढ़ता है तो आपको टॉप हैवी बनाना पड़ेगा उसको. सो दिस इज गोइंग टू बी 8 into 120/100, which is nothing else but 12. 8 is 96, which is basically 9.6 minutes. तो अब टोटल हो जाएगा ये 9.6 प्लस अनदर 22, which is 9.6 plus another 22, which is 31.6 minutes. पहले 30 मिनट में काम हो रहा था, अब 31.6 लग रहे हैं. तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज, अपना टाइम 12,000 है, divided by 31.6, so that's 12,000 divided by 31.6, which is 379.74, which is approximately 3738. अगेन लाइक आई सेड, मॉड्यूल ने इसके आगे जाके इसको भी 75% से मल्टीप्लाई किया, विच आई थिंक इज इनकरेक्ट. That is it. Does anybody want to write down any part in this? One in the chat box. Does anybody have any doubts? Drop them in the chat box. Neha, which part? Last wala? Do I need to scroll it up, or is wherever it is it okay? लिखते वक्त ही थोड़ा कंसाइज लिखना चालू करता हूँ, so that we can have everything in one screen then. Is this okay? या इसके भी ऊपर वाला लिखना है? Fine. फटाफट, giving you 2 minutes.
चलो, one in the chat box if you still need time. One if you still need time, or I will continue. Yeah, you done? Can I continue? चलो, this is the next kind of a question that is asked, और हेवी में अगर इस चैप्टर में पूछोगे तो यही है. अब इसके बाद बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो जो थोड़ी देर पहले किया वो, एंड दिस एंड दैट इज द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. नंबर ऑफ ऑपरेटर्स 15, डेली वर्किंग आवर्स 8, नंबर ऑफ डेज पर मंथ 25, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ इज 300, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट इज 8. अब ये जो है ना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ 300, ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि हर एक महीने में आप अलग अलग दिन काम करते हो. हाउ कैन यू से कि स्टैंडर्ड 300 यूनिट एवरी मंथ बनते हैं? नहीं होता है. दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड दैट कैन बी सेट, बट इट हैज बीन गिवन फॉर अनदर रीजन एंड आई टेल यू व्हाई. तो फिलहाल आप इस 300 को इग्नोर करोगे. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इन नवंबर 2015. मैन डेज लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंटिज्म 30, ये डेज है क्योंकि मैन डेज में दिया है. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 240, आइडल टाइम इज 276 आवर्स. आपको पूछा है कितना परसेंट एब्सेंटिज्म होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर कितना है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर कितना है, एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर मैन पर मंथ. लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस. इन क्वेश्चंस में आप तीन चीजें फाइंड करोगे. नंबर 1 इज डिजाइन कितने की बनाई है, नंबर 2 इज इफेक्टिवली मिलना कितना चाहिए, एंड नंबर 3 इज एक्चुअली मिलता कितना है. अब ये आप आर वाइज कर सकते हो या यूनिट वाइज कर सकते हो. आई विल सी इफ आई कैन ट्राई टू डू इट इन बोथ. आर वाइज डिजाइन 15 ऑपरेटर रखे आपने फॉर 8 आवर्स एवरी डे फॉर 25 डेज. तो आपने जब डिजाइन बनाई इसकी तो आपने कितने घंटे के लिए बनाई? 15 ऑपरेटर्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे फॉर 25 डेज. तो आपकी डिजाइन बनी थी 15 इंटू 8 इंटू 25 विच इज 3000 आवर्स के लिए. सो द डिजाइन दैट यू हैव मेड हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ टोटल ऑफ 3000 आवर्स. करेक्ट? प्रॉब्लम इज आपको 3000 पूरा नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देर इज मैन डेज लॉस ड्यू टू एब्सेंटीज एंड आइडल टाइम. बट एक मिनट, आइडल टाइम उनकी गलती नहीं है. दिस एब्सेंटिज्म इज अ प्रॉब्लम. तो जो वो एब्सेंट थे उस एब्सेंट के लिए मैं उनको जज नहीं कर सकता ना. तो व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे ये चेक करना है कि चलो 3000 घंटे नहीं मिलते, बट अगर उसमें से एब्सेंटिज्म निकाल दो क्योंकि अब उनकी छुट्टियां हैं उनको लेनी पड़ेंगी, तो पता करो कि कितना मिलता है. तो आई एम गोइंग टू से दैट ये 300 ये 3000 घंटों में से ये 30 एब्सेंटिज्म वाले डेज निकाल दो. अब ये डेज में है, ये आवर्स में है, तो यू विल हैव टू डू इज 3000 माइनस 30 इंटू 60. डेज को डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर दो. दिस इज एन आवर्स. 30 डेज इज 30 इंटू 8. बट एक मिनट, वो है ना आइडल भी थे 276 आवर्स के लिए. बट एक मिनट, आइडल थे उनकी गलती है. कैसे पता आपको उनकी गलती है? हाउ आर यू नॉट श्योर कि रॉ मटेरियल नहीं था इसलिए वो आइडल थे, लाइट नहीं थी इसीलिए वो आइडल थे, मशीन बंद पड़ गई थी इसीलिए वो आइडल थे? हाउ कैन यू से उनकी गलती है? तो ये आइडल जो बैठे हैं ये आपकी गलती भी हो सकती है. और अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, अगर आइडल बैठे थे और आपको लगता है उनकी गलती है तो आपने कुछ किया कि नहीं उसके बारे में? तो हाँ, डिजाइन आप 3000 यूनिट के लिए बनाते हो पर 3000 यूनिट का आउटपुट नहीं मिलता. तो इफेक्टिवली क्या मिलता है? इफेक्टिवली ये 8 इंटू 3 240 घंटे निकल जाएंगे.
तो आपको 3000 में से 240 निकाल के एंड 276 निकाल के सिर्फ मिलते हैं 2484 आवर्स। फैंटास्टिक। बट एक एक्चुअल आउटपुट कितने का मिलता है? वेल योर एक्चुअल आउटपुट इन दैट मंथ इज 240 यूनिट्स। एक मिनट, 240 यूनिट बनाए थे, टाइम के हिसाब से बताओ ना। टाइम के हिसाब से 240 यूनिट एट अ स्टैंडर्ड ऑफ 8 आवर्स पर यूनिट लगा था एक्चुअल 240 इंटू 8, which is 1920 hours, and that's it. मैंने डिजाइन बनाई 3000 आवर्स के लिए, इफेक्टिवली मिलता कितना है? 2484 आवर्स। ठीक है, एटलीस्ट 2484 आवर्स का तो आउटपुट दो। मैं आपसे ये 30 दिन नहीं मांग रहा, ये 276 आवर्स नहीं मांग रहा, बट आप एक्चुअली कितने का देते हो? 1920। तो ना ये सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है ठीक से, ना मेरा लेबर एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो लेबर की एफिशिएंसी के बारे में बात करो तो मिल रहा 1920 आवर्स का आउटपुट है, और वो बोल रहे हैं कि वो काम कितने घंटे कर रहे हैं? 2484 आवर्स। तो एफिशिएंटली 1920 डिवाइडेड बाय 2484 into 100, my labor is only 77.29% efficient. What about utilization? Well, मैं utilize सिर्फ और सिर्फ 1920 आवर्स के लिए कर रहा हूं, बट मैंने डिजाइन बनाई थी 3000 घंटे की, तो a lot has been lost. That's going to be 1920, sorry, divided by 3000 into 100, which is 64%. My system is only 64% utilized. Now let's come to answering one question at a time. Percentage of absenteeism. 30 दिन थे absent. 30 दिन is how many घंटे? So absent is 30 days, which is nothing else but 30 into 8, which is 240 hours. In a total of 3000 hours, 240 hours were lost due to absenteeism. So percentage of absenteeism is 240 out of the 3000 into 100, which is 240 divided by 3000 into 100, which is 8%. They're absent 8% of the time. Question number 2, what is the efficiency of labor? तो यहाँ लिख देता हूँ 8% absenteeism है. Efficiency of labor is 72.29. Productivity of the labor is 60. Sorry, utilization is 64. Productive efficiency is 72.29. And ये जो है ना overall productivity in terms of items produced per unit, per man, per month. तो एक महीने में एक आदमी कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है? वेल मेरे पास 15 आदमी है. 15 आदमी अगर मिल के 240 यूनिट बनाते हैं तो प्रोडक्टिविटी विल बी कितना? 240 यूनिट्स बाय 15 men, which is going to be 240 divided by 15, which is 16 units per man. अब उन्होंने क्या किया है? This is what the per man output is in that month. उन्होंने उसे इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया. वेल देयर वाज नो क्वेश्चन दैट सेड के कंपेयर करके बताओ, बट दे हैव. तो वही 300 यूनिट जब बनते थे ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस 15 मेन से, तो योर प्रोडक्टिविटी वाज 20 यूनिट्स पर मैन. तो कैन आई से प्रोडक्टिविटी हैज फॉलन? एंड देन दे आस्क्ड यू कितनी गिरी है. वेल ओरिजिनल से अब कितनी बाकी है? 16 upon 20 into 100. 16 upon 20 into 100 is 80%. Correct? So there has been a fall of 20%. So these are the answers that they are expecting. One in the chat box if anybody needs any time to write down anything, or I'll move on.
विच पार्ट, ये ऐसा रखूंगा तो चलेगा? ठीक है, दिख रहा है? फैंटास्टिक. क्विकली कॉपी दैट डाउन टिल देन आई पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. One in the chat box if you still need more time. One if you still need more time. Fine. चलो. The next question that has been asked, and like I said, इस section में बहुत अलग-अलग questions हैं, and that is why you will see maximum weightage. There is no single type of a question. बाकी सब sections में एक question कर देते हो तो पूरा section cover हो जाता है. इसमें वैसा नहीं है. One question does not cover the entire section up. Anyway, incentive scheme वाला question. An incentive scheme allows proportionate production bonus beyond 100%. What does that mean? अगर आपका 100% प्रोडक्टिविटी के ऊपर है तो आपको उतना बोनस मिलेगा. अगर आप 110% प्रोडक्टिव हो तो 10% बोनस मिलेगा. 120% प्रोडक्टिव हो तो 20% बोनस मिलेगा, एंड सो ऑन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव बोनस total payment received by an operator on a particular day during which the following particulars apply. Number one, operation, assembling पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो. तो बंदा क्या कर रहा है? पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो बना रहा है, अपने बेसिक वाले रेडियो. वर्क कंटेंट 30 स्टैंडर्ड मिनट्स पर असेंबल्ड सेट. एक सेट असेंबल करने के लिए उसको 30 स्टैंडर्ड मिनट्स लगता है. सो द टाइम टेकन इज 30 मिनट्स. अटेंडेड टाइम 8 आवर्स. 8 घंटे के लिए वो बंदा काम अटेंड करता है. Time spent on unmeasured work is 2 hours. What does that mean? What it means is that 8 घंटे वो आता तो है, पर 8 घंटे वो मेरा काम नहीं करता. अरे तो आता क्यों है? अरे क्योंकि उसको दूसरे काम करने पड़ते हैं. साफ सफाई करनी पड़ती है, बॉक्सेस खोलने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल रेडी करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड अनमेजर्ड वर्क. इट इज वर्क, बट आई कांट मेजर इट बिकॉज वो मेरे जो पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियोज है वो बना नहीं रहा है. It is like saying अगर खाना बनाना है तो you can't immediately start cooking. There needs to be buying of the vegetables, bringing in of the vegetables, then the cooking begins. There is a prep that is required. और वो prep करने के लिए बंदा 2 घंटे लगाता. तो measured and unmeasured काम हो जाता है. फिर measured काम 6 घंटे के लिए होगा, unmeasured 2 घंटे के लिए. मतलब अगर आप उसको जज करने वाले हो तो सिर्फ 6 घंटे के लिए जज करना, 8 घंटे के लिए जज मत करना. नंबर ऑफ सेट्स असेंबल ड्यूरिंग अ डे इज 15. उसने इस दिन में 15 सेट असेंबल किए. Then let me find out on a standard basis करने कितने चाहिए थे. 6 hours is 6 into 60 which is 360 minutes. If he takes 360 minutes in total, how many units should he produce on a standard basis? Standard output should be 360 by 30 per unit, which is 360 divided by 30. 12 यूनिट बनने चाहिए थे. Do you notice that he works exceptionally well? Why? क्योंकि वो उसी टाइम में, जिस टाइम में 12 यूनिट बनने चाहिए, उस टाइम में he is assembling 15 यूनिट्स. इसका मतलब उसे बोनस देना पड़ेगा. पर कितना? प्रपोर्शनेट. जितना अच्छा काम करता है उतना. कितना अच्छा काम करता है ये कैसे पता चलेगा? फाइंड आउट. ही इज वेरी गुड, तो उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी एफिशिएंसी अगर जज करनी है
तो 15 आउट ऑफ 12 इंटू 100 विच इज 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100. बंदा 125% एफिशिएंट है. मतलब आप उसे नॉर्मली जो पगार देते हो उससे 25% ज्यादा दोगे. बट याद रखना कि ये देते वक्त उसे बोनस सिर्फ मेजर्ड वर्क पे मिलेगा. अनमेजर्ड वर्क पे बोनस मत देना. व्हाट डज दैट मीन? पगार कैलकुलेट करते वक्त टाइम को स्प्लिट कर दो. 6 आवर्स इन, 2 आवर्स इन. आप क्या पगार दे रहे हो उसको? पगार दे रहे हो आप उसको 4 रुपया पर आवर. पगार दोनों पे देना. 6 into 4 विच इज 24 रुपीज एंड 2 into 4 विच इज 8 रुपीज. पर बोनस सिर्फ और सिर्फ मेजर्ड वर्क पे मिलेगा, अनमेजर्ड वर्क पे नहीं. तो अगर 24 रुपए पे मुझे 25% बोनस देना है एक्स्ट्रा, तो कैन आई से 24 का 25% बोनस देना पड़ेगा, विच इज 24 का 25% इज 6 रुपीज बोनस. तो अब अगर पगार की बात करो, बिकॉज दे आस्क्ड इट इन 3 डिफरेंट सेक्शंस, वी विल गिव इट टू देम इन 3 डिफरेंट सेक्शंस. मेजर्ड का पगार, अनमेजर्ड का पगार एंड बोनस. मेजर्ड काम पे 24 रुपए दे रहा हूं, अनमेजर्ड पे 8 एंड बोनस 6, इज अ टोटल ऑफ 38 रुपीज. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. एंड उसकी नेट प्रोडक्टिविटी पूछिए. द नेट प्रोडक्टिविटी in this case is going to be how many units is he producing in that stipulated amount of time. Meaning अगर आप उसको 8 घंटे देते हो तो 15 यूनिट बना रहा है, करेक्ट. पर 8 घंटे में 15 यूनिट नहीं बन रहे हैं, 6 घंटे में बन रहे हैं. तो हिज प्रोडक्टिविटी is 15 units in 6 hours, which is 2.5 units per. Bolo. One in the chat box if anybody needs any time to write any part. तो मैं एक्चुअली बगल बगल में कॉपी कर लेता हूँ. One in the chat box if anybody still needs any time to write. Find them now. Can you tell me which paper Neha? Do you have my number? Can you telegram me just that question ताकि फिर मैं I don't have to look sit hunting for it. Very quickly telegram the screen grab for me और उतना ही कर देना ताकि I can copy it directly into the sheet and do it for you. तो अगर it is the same kind of a question that I'm going to do next, तो फिर मैं वो वाला नहीं लूंगा, वही वाला ले लेता हूँ. कवर हो जाएगा सब उसी में. Telegram it to me please.
सॉरी, दिया, आर यू डन? फाइन. दिस इज द क्वेश्चन, निया. ये जस्ट थोड़ी देर पहले कर चुके हैं. करेक्ट. So this is the question that we just did some time ago. You have a total of 25 working days per month, जहां 8 घंटे के लिए काम करते हो. ऑपरेटर टाइम 3 मिनट, मशीन टाइम 36 मिनट, टोटल ऑफ 48 मिनट्स. अपना था 22 मिनट, 8 मिनट फॉर अ टोटल ऑफ 30 मिनट्स. नंबर ऑफ ऑपरेटर्स 1, नंबर ऑफ मशीन्स 1. सो टू बिगिन विथ, पहले तो आप कितने घंटे काम करते हो पर मंथ. सो दैट्स 25 days per month for 8 hours, which is 200 hours. 200 hours is 6 2s are 12, 12,000 मिनट. दैट डजंट चेंज. अब एक यूनिट बनाने के लिए टेक्निकली आपको लगता है 48 मिनट्स. एट 48 मिनट्स पर यूनिट, number of units is 12,000 divided by 48, which is 250 units. 250 यूनिट बनाते हो. What does the question say? If the plant is operated at 80% efficiency, operator is working at 100% efficiency, calculate the output per month. Plant आपका सिर्फ 80% efficient है, operator 100% efficient है. Fine then. प्लांट अगर 80% एफिशिएंट है तो आपको ये 250 यूनिट मिलना है नहीं, 250 का 80% मिलेगा. तो एक्चुअल आउटपुट इज 250 का 80% होगा. 250 का 80% इज 250 इंटू 0.8, विच इज 200 यूनिट ही मिलेंगे. दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर 2, if the machine productivity is reduced by 10% over the existing level, assess the output in units per month. If the machine productivity is reduced by 10%, machine की productivity reduce हो रही है, तो again there is a M for machine and O for operator. There is a before and an after. पहले क्या होता था? The operator was taking 12 minutes and the machine 36. टोटल मिला के 48 हो रहा था. करेक्ट. अब क्या हो रहा है? The man productivity, the machine productivity is reduced by 10%. तो कहना ऐसे, ऑपरेटर वही है 12, ये मशीन की प्रोडक्टिविटी को कम करना है. कम करना है तो 36 को बढ़ाना पड़ेगा. कितने से? 10% से. करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू बी 36 इंटू 110 अपॉन 100. 39.6. So that's going to be 39.6 minutes
करेक्ट. 39.6 प्लस द 12 अब पर यूनिट बनाने के लिए लगेगा 51.6 मिनट्स. तो इसके हिसाब से नया आउटपुट विल बी 12,000 मिनट divided by 51.6, which is 12,000 divided by 51.6, which is 232.55. So 232.55. करेक्ट. बताता हूं ना. अब उन्होंने क्या किया है पता है. उन्होंने वापस इसका 80% किया होगा अकॉर्डिंग टू द प्लांट एफिशिएंसी, जो मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि ये मेन क्वेश्चन में होना चाहिए. अगर ये मेन क्वेश्चन में नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. बट अकॉर्डिंग टू 80% एफिशिएंसी, 232.55 का 80% is going to be into 0.8, which is 186.0. So 186 units. This should be the answer in the module then, in your suggested. Is that correct? वो राउंड ऑफ यहाँ पे राउंड ऑफ किया होगा ना, और फिर उसके बाद किया होगा. तो यहाँ अगर 232 ले लो, 232 का 80%, तो डॉट 185.6 ही आता. 184 तो नहीं आता है. वाई मेड एनी मिस्टेक्स. 48 250 बराबर 36. व्हाट इज 52 मिनट्स. यू कांट टेक 52 मिनट्स ना, वो गलत है. ये बराबर है 51.6. यू कांट अप्रोक्सीमेट द मिनट्स. दैट इज रॉन्ग. You can't approximate decimal number of minutes. Bolo, one in the chat box if anybody still needs time to write. Or then I'll continue. Yes, because they have na everywhere. Chalo then. Moving on to the next. Sorry. And kind of the last kind of question that is asked in this. This covers almost every kind of question that has been asked. And that is, the following results are recorded in a study of a work sampling over 100 hours in a machine shop. Total number of observations, 2,500. Number of observations in which no working activities were noticed is 400. Ratio of man to machine, 2:1. Average rating factor is 115%. Number of articles produced during the study is 6,000. As per the policy of the company, rest and personal allowances are taken as 12% of normal time. Calculate the standard time to produce an article. Number 1, आप कितना घंटा काम करते हो. 100 hours, but 100 hours को we will first convert into minutes. So let's break it down like a tree. 100 hours
is 100 into 60 minutes, which is 6,000 minutes. ये 6,000 मिनट्स पूरे एक्चुअली मिलते हैं आपको, काम होता है नहीं। क्यों? क्योंकि इन अ टोटल ऑफ 2,500 ऑब्जर्वेशंस दैट आर रिकॉर्डेड, काम सिर्फ और सिर्फ 2100 के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि 400 टाइम जब मैंने आपको ऑब्जर्व किया था, देयर वर नो वर्किंग एक्टिविटीज। सो व्हाट वी डू इज वी स्प्लिट दिस एज वर्किंग activities and non-working activities. Working activities will be 2100, non-working will be 400. Therefore, time. Working wala time will be 2100 upon 2500 into 6,000, and non-working wala time will be 400. इसकी जरूरत नहीं है टेक्निकली, बट अब लिखा है तो मैं निकाल रहा हूं, into 6,000. So which is going to be 2100 multiplied by 6,000 divided by 2500, which is 5040 मिनट्स के लिए काम कर रहे थे। और जो बाकी बचा, अब 6,000 में से बचेगा क्या? आई थिंक 960 मिनट्स बचेंगे। अगेन जरूरत नहीं उसकी, पर फिर भी नाउ बिकॉज निकाला है वो भी निकाल देता हूँ। डिवाइडेड बाय 2500 इज 960 मिनट्स। करेक्ट? तो आपने एक्चुअली काम अटेम्प्ट किया है सिर्फ 5040 मिनट्स। इन 5040 मिनट्स में आपने कितने यूनिट बनाए? आपने 6,000 यूनिट बनाए। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये पूरा टाइम है इन इन 5, या फिर है ना बाद में कॉपी करने के लिए अच्छा हो जाएगा। एक लाइन ऊपर, इन 5040 मिनट्स 6,000 units produced. So it is going to be 5040 upon 6,000 minutes units, which is 5040 divided by 6,000, 0.84 minutes per unit. But ये 0.84 अब टूटेगा दो लोगों में। There will be a man and machine ratio। कैसे दिया? पहले man फिर machine। Ratio of manual to machine element is 2:1, man to machine। कितना है? 2 to 1। 2 plus 1 is 3। So 2 out of 3 and 1 out of 3 of what? 0.84. So that is going to be 0.84 into 2, divide that by 3, which is 0.56 minutes of man time. This is average time of man, and this is going to be जो बचा। अब बचता क्या है? माइनस 0.84 कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो 0.28। अब नॉर्मलाइज मैन होता है, स्टैंडर्डाइज मैन होता है। मशीन ना नॉर्मलाइज होता है ना स्टैंडर्डाइज होता है। रेटिंग फैक्टर 115% का दिया आपने, तो एवरेज टाइम को नॉर्मलाइज करेंगे 0.56 इंटू 115%। सो नॉर्मल टाइम विल बी 0.56 0.644, 3 डेसिमल तक रखना। करेक्ट? अब स्टैंडर्डाइज करना है इसको। 0.644 को इन्फ्लेट करना है कितने से? 12% है, रेस्ट एंड अदर अलाउंसेस, तो 12%। 0.644
plus another 12%. So 0.644 plus another 12% is 0.72128, which अगर अप्रोक्सीमेटली बात करोगे 7 to 1 हो जाएगा. तो टोटल टाइम लगेगा 0.728 plus 7 to 1, sorry, plus which is 1.001 minute per unit is your standard time. ये आ गया स्टैंडर्ड टाइम. क्या चाहिए था आपको? योर क्वेश्चन सेड स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस पर आर्टिकल. अब ये करने के बाद टेक्निकली ना ये आगे वाला पार्ट पूछते नहीं, मतलब रादर अब तक पूछा नहीं है, ये नए वाले सेक्शन में डाला था, बट क्वेश्चन पूछते वक्त इतना ही पूछते हैं. दे कीप इट सिंपल. टाइम एंड मोशन तो टाइम एंड मोशन, इसमें आगे प्रोडक्टिविटी घुसा दिया. अब उन्होंने क्या बोला है? गिवन दैट द शॉप प्रोड्यूसेस 42,000 articles per month, 25 working days, 5 workers working 8-hour shifts per day. Consider a 7% absentees. Compute the efficiency, utilization and the productive efficiency of labor. Again, आप इसमें 3 चीजें निकालोगे. And the 3 things are design, actual and effective. So what you are going to do is, you are going to find 3 things. And that is design, actual and effective. Let's talk about the design. आप 25 दिन काम करते हो, working with 5 workers, 8-hour shifts. So that's 25 into 5 into 8. So design बनाई है. कितने घंटे की? 1000. इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो. 60,000 मिनट की डिजाइन है. इफेक्टिवली मिलता कितना है? नहीं मिलता है 60,000 मिनट, क्योंकि 7% इज लॉस ड्यू टू एब्सेंटीज. अब यहाँ पे सिर्फ एब्सेंटीज है, आइडल नहीं है. तो इस 60,000 में से आप वो 7% निकाल दो, तो बचता है 55,800 मिनट्स. अब आ जाता है एक्चुअल आउटपुट पे. आप एक्चुअली बनाते हो 4,200 आर्टिकल्स. अब स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 4,200 आर्टिकल्स को लगना कितना चाहिए? वेल 4,200 आर्टिकल्स made with, sorry, 42,000 articles made at 1.001 article per minute is going to be which is 42042. तो आपने डिजाइन बनाई है 60,000 मिनट की, सॉरी, इफेक्टिवली मिलना चाहिए 55,800 मिनट्स, पर एक्चुअली मिलता है 42,042 मिनट्स. तो अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करो ऑफ माई लेबर, तो माई लेबर ओनली गिव्स मी एन आउटपुट ऑफ 42042. फ्रॉम व्हाट दे शुड एक्चुअली गिव मी इज 55,800, which is going to be 42042 divided by 55,800 multiplied by 100, which is 75.34%. और अगर यूटिलाइजेशन की बात करो, तो आई एम ओनली यूटिलाइजिंग देम फॉर 42042 against the total, which is 60,000 into 100, which is
70.07%. That's it. This is what you will expect in the final answer. पहले ये वाला working और फिर नीचे वाला. One in the chat box if anybody wants to write any part. If yes, which part, let me know. Then I'll wait accordingly and I will show you that part of the screen. कौन सा वाला? अच्छा, यही रखूं? Which part? This part you're talking about? आपने आपने बोला कि आप 25 दिन काम करते हो 5 वर्कर्स के साथ फॉर 8 आवर्स, बराबर? तो उस हिसाब से एवरी मंथ आपको 1000 घंटे मिलने चाहिए, बराबर? उन 1000 घंटे मतलब कितना होता है? मतलब 60,000 मिनट होते हैं, करेक्ट? बट मैं आपसे 60,000 घंटे का आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि उसी महीने में 7% एब्सेंटिज्म थी. तो ठीक है, तो मैं इफेक्टिवली एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 55,800 मिनट्स का आउटपुट तो दो, पर आप एक्चुअली देते हो 42,042 मिनट्स का आउटपुट. इज द 3 कैलकुलेशंस क्लियर? यस और नो? ये 3 कैलकुलेशन कैसे किया वो समझता है क्या? एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. देयर आर टू थिंग्स हियर. एक है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड यूटिलाइजेशन बाय यू. मतलब आप लेबर कितना प्रोडक्टिव है और आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो. नाउ अंडरस्टैंड, लेबर कितना प्रोडक्टिव है जज करने के लिए. अब प्रोडक्टिविटी जज करने के लिए क्या जज करोगे? कि मुझे आउटपुट मिलना क्या चाहिए और मिलता क्या है, करेक्ट? बट कैन आई जज माई लेबर अगेंस्ट 60,000 मिनट्स? नो. क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे हम 60,000 घंटे मिनट्स अवेलेबल ही नहीं थे, 7% एब्सेंटिज्म में गया है. अब वो क्यों गया है? लीगल छुट्टी है उनकी, या फिर ड्रिल था, फायर ड्रिल था. तो यू कैनॉट जज देम फॉर ऑल 60,000 यूनिट्स नंबर योर मिनट्स. व्हाई? बिकॉज उसमें से 7% ऑफ द टाइम दे वर आइडल, एब्सेंट. तो जज कितने के लिए करो? इस 60,000 में से वो 7% हटा दो एंड जज देम फॉर दिस. ठीक है, तो मुझे आपसे कितना आउटपुट एक्सपेक्ट करना चाहिए? मुझे आपसे 55,800 मिनट्स का आउटपुट एक्सपेक्ट करना चाहिए. फाइन. बट स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने जाओ तो आपने सिर्फ 4200 यूनिट्स बनाए हैं, 42,000 यूनिट्स बनाए, सॉरी. स्टैंडर्ड ये बोलता है कि एक यूनिट बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट लगता है. तो आपको ये काम पूरा करने के लिए 42042 मिनट्स लगने चाहिए थे. बट आप तो बोल रहे हैं आपने 55,800 मिनट्स के लिए काम किया, तो आउटपुट भी उतने का दिखना चाहिए ना? डू यू नोटिस कि जितने टाइम उन्होंने काम किया उतने का आउटपुट दिख नहीं रहा है? एंड बिकॉज जितने टाइम उन्होंने काम किया उतने का आउटपुट दिख नहीं रहा है, आप प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे. तो आपका लेबर इज ओनली प्रोडक्टिव फॉर 42,042 मिनट्स अगेंस्ट द प्रोवाइडेड टाइम which is 55,800 minutes. And that is why this is where productivity comes from. Then what is utilization? Well, utilization is I as a owner am using or utilizing the plant how well? Well, I'm only utilizing it for an output of 42,042 minutes. हाँ, पर खरीदा कितने के लिए?
खरीदा 60,000 मिनट के लिए, क्योंकि मैं 5 वर्कर को रोज 8 घंटे की पगार दे रहा हूं फॉर 25 डेज, तो मैं सिर्फ यूटिलाइज कर पा रहा हूं 70%. इज दिस अंडरस्टूड? Yes, yes. Productivity and productive efficiency means the same. Chalo, anybody needs any time to write down any part? Fine. Now, so this is it about time study, motion study, productivity, and job evaluation. These are the kind of questions that you will see in this. Now, the next chapter, which has been asked the most maximum number of times, is project management. And that is why I want to do one full-fledged question on project management that will pretty much cover every aspect. And obviously, I'm not going to do probabilistic analysis, or I'm not going to do uh, crashing, because those are the parts that are not asked that prominently. The part that is asked prominently is टाइम एनालिसिस. उसमें भी अगर 3 टाइम दे भी दे तो भी आप कंसोलिडेट करके उसको एक टाइम बना के देन यू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट द सॉल्विंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल रिमेन द सेम. And to solve this, what I want to do is I want to use the question in the mock test paper. अब ये क्वेश्चन पूछा गया है फॉर अ स्मॉल part, but I'm going to elaborate it and I'm going to take it ahead and do the entire question. Draw a network diagram for the following activities. Find the critical path and the total project duration. I'm not going to stop at the critical path and the total project duration. I'm going to find the total float, the free float, and the independent float, because that's the full-fledged question that can ever be asked in one entire question. So to begin with, draw a network. A, B, C have no predecessors, तो A, B, C अपने हिसाब से चालू हो जाते हैं. A, B, and then C. Wherever A ends, D begins. A ends, D begins. B ends F, B ends E. B ends E, B ends F. Wherever C ends, G begins. C ends, G begins. D ends, H begins. D ends, H begins. E ends, I begins. E ends, I begins. F and G have to come together for J to begin. F and G have to come together, but check कर लेना, F and G independently कुछ चालू करते हैं क्या? नहीं. तो लेके आ जाओ साथ में फिर. F and G have to come together for J to begin. H and I come together for K to begin. चेक कर लो H and I को किसी और की जरूरत है क्या? नहीं है. तो फिर डन देन. H and I come together for K to begin. तो ये H and I एक साथ लेके आ जाओ and start your K. J and K come together for L to begin. J and K have to come together. अब आप J जाके वहां ऐड कर दो या फिर J K को एक्सटेंड करके यहाँ ड्रॉ कर दो. इज completely up to you. आई एम डूइंग दिस. ये मेरा J है एंड ये मेरा K है. Correct? This is going to be my rough
विच आई एम गोइंग टू नाउ फेयर। अगर फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास मेरे साथ करने वाले हो तो फटाफट फेयर डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करना चालू कर दो। बड़े सर्कल ड्रॉ करना क्योंकि मैं इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास करने वाला हूँ, लाइक आई सेड। दो टाइम लिखने पड़ेंगे फिर इसमें। लास्ट वाला ये ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आसान हो जाए थोड़ा, इतने में नेटवर्क कवर हो जाएगा। हल्का सा चाहिए तो आगे ड्रॉ कर लो।
Good. 2354. One five eight one. 2432. There is an L also here. Very quickly number all the events. Remember, leaving arrows से ही number करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and lastly 10. So this should be your fair network. अब step 1, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके सोल्यूशन के लिए what you will do is find all the paths, identify the critical path and the project duration. That's it. तो आपको सब paths लिखनी है. Path number 1 will be ADHKL. Path number 2 will be BEIKL. Path number 3 will be BFJL. And path number 4 will be CGJ and L. ये करने के बाद what you will do is you will write down all the timings of the paths and then tell them इसमें से critical कौन सी है. So all paths बाद में लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली पाथ लिखना चालू कर रहा हूं. ADHKL which is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. डेटा क्या है, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यूरेशन इज इन मंथ्स. सो 12 मंथ्स. यूनिट्स देख लेना प्लीज.
BEIKL, BEIKL. 3 plus 1 is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 months. Then there is BFJL. BFJL. 3 plus 5 is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 months. Correct? 14 months. And lastly, CGJL. CGJL. 5 plus 8 is 13. 13 plus 4 is 17. 18, 19. 19 months. Correct? Yes. So can I say critical path is the CGJL वाला? But मैं अभी नहीं मार्क कर रहा हूं because I want to show you कि हम critical path forward and backward path से निकालने वाले हैं. Can I start the critical path? Does anybody want to? Can I start the forward and the backward path? Does anybody want me to wait for anything? One in the chat box if you want me to wait for anything, or I'm starting the forward and the backward pass. One if anybody wants me to stop for anything. Fine then. I will start the forward pass. For the forward pass, again, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है. इस क्वेश्चन में यही आपका आंसर है. हो गया 7 मार्क के लिए. तो आप नीचे लिख दोगे that CGJL is the critical path. या मैं लिख ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में. सो ये नीचे आ जाएगा. इसके ऊपर हेडिंग होगी all paths in the network. These are the paths. Therefore, critical path. $19 months का project duration है. Done. Now this is where technically their solution comes to an end. उनको ये चाहिए. अब आप क्या करोगे उसके बाद? क्रिटिकल पाथ को डबल लाइन कर दोगे. मैं बाद में डबल लाइन करने वाला हूं आफ्टर आई डू द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड पास. पर भूलना मत, डबल लाइनिंग द क्रिटिकल पाथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलो, द स्टार्टिंग विथ द फॉरवर्ड पास. स्टार्ट विद द फर्स्ट नोड 0. Single entry 0 plus 2 is 2. Single entry 0 plus 3 is 3. Single entry 0 plus 5 is 5. Single entry 4 plus 2 is 6. Single entry 3 plus 1 is 4. Dual entry 3 plus 5 is 8. 5 plus 8 is 13. Double entry 6 plus 1 is 7. 4 plus 2 is 6. 7 and 6. 7 and 6 में क्या लूंगा? 7 लूंगा या 6? Correct. The greater value 7 and 7 plus 3 is 10. 13 plus 4 is 17. क्या लूंगा? Again, the greater value 17 and 17 plus 2 is 19. Done. The project duration is 19 months. Tally होता है. हमें भी 19 ही आया था. अब बैकवर्ड पास से आपको क्रिटिकल पाथ पता चल जाएगी. अब बैकवर्ड पास चालू कर दूंगा तो आई विल स्टार्ट विथ 19. 19 minus 2 17. Single return. 17 minus 3 सिंगल रिटर्न है. यस. 17 में से 3 निकाल दो तो बचता है 14. सिंगल रिटर्न है. यस.
17 में से 4 निकाल दो तो बचता है 13। सिंगल रिटर्न है, यस। 14 में से 2 निकाल दो 12। सिंगल रिटर्न है, 14 में से 1 निकाल दो 13। डबल रिटर्न है, यहां से भी यहां से भी, तो दोनों इवेल्युएट करना पड़ेगा। 12 1 11 होता है, 13 और 5 8 होता है। तो क्या लूं? शुड आई टेक 11 और शुड आई टेक 8? और शुड आई टेक? करेक्ट, द लेसर आउट ऑफ द टू, विच इज 8। 13 minus 8 is 5, single entry. 13 minus 4 is 9, single entry. ट्रिपल एंट्री, ट्रिपल एंट्री तो तीनों जगह से इवेल्युएट करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली 5 minus 5 जीरो वाला ही लेंगे। Let's start finding the slack at every head. 0, there is a slack of 7, there is a slack of 6 6 12 13 7, there is a slack of 7, there is a slack of 5, there is a slack of 8, there is a slack of 0 0 0 and 0. The path connecting all zero slacks is called the critical path. उस critical path को double line करना पड़ेगा. So very quickly then, we will double line the critical path. This is 1. This is 2. This is the last. And this is going to be your critical path. Now, टेक्निकली आपका प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है. लाइक आई सेड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास करने की भी जरूरत नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि फिर अगर पूछ लिया फॉर योर टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो रेडी होना चाहिए. नाउ आफ्टर दिस वी नीड अ टेबल. अब टेबल में क्या होगा? टेबल में पहला कॉलम होगा एक्टिविटीज. तो ऑल एक्टिविटीज राइट फ्रॉम ए अप टिल एल होनी चाहिए. तो यू विल स्टार्ट विथ एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ए, एल. राइट फ्रॉम ए अप टिल एल. अब मैं क्या करने वाला हूं, यही डायग्राम मैं थोड़ा छोटा करके बगल में कॉपी करने वाला हूँ टेबल के, बिकॉज सो दैट आई डोंट हैव टू स्क्रोल ओवर एंड ओवर अगेन. टाइम 2 3
5, 4, 1, 5, 8, 1, 2, 4, 3, 2. Correct? ये होने के बाद the first thing that we write down is the earliest start time. अब we are going to need a few columns. Earliest start will give you earliest finish. Then you will have latest start and latest finish. पहले इतना खत्म कर लेते हैं. आ जाओ. I need the earliest start of every activity. Every activity starts at its tail. बराबर यहाँ पे. So every activity starts at its tail. A, B, C all start at 1. So 0, 0 and 0. D starts at 2, 2 है. E starts at 3, 3 है. F starts at 3, 3 है. G starts at 4, 5 है. H starts at 5, 6 है. I starts at 6, 4 है. J starts at 7, 13 है. K starts at 8, 7 है. L starts at 9, 17 है. करेक्ट. अर्लिएस्ट स्टार्ट में आप एक्टिविटी का ड्यूरेशन ऐड कर दो तो अर्ली फिनिश आ जाएगा. सो दैट्स 2, 3, 5, 6, 4, 8, 13, 7, 6, 17, 10, 19. डन. उसके बाद वी मूव ऑन टू आवर लेटेस्ट फिनिश. Latest finish time. Let's start with A. A finishes at 2, 9. B finishes at 3, 8. C finishes at 4, 5. D finishes at 5, 13. E finishes at 6, 12. F finishes at 7, 13. G finishes at 7, 13. H finishes at 8, 14 है शायद.
I finishes at 8, 14 है. J finishes at 9, 17 है. K finishes at 9, 17 है. L finishes at 10, 19 है. लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. लेट फिनिश किया होगा तो लेट स्टार्ट किया होगा. तो इट इज 9 minus 2, 7, 8 minus 3, 5, 5 minus 5, 0, 13 minus 4 is 9 if I'm correct. 13 minus 4, 9 बराबर है. 12 minus 1, 11, 13 minus 5, 8, 13 minus 8, 5, 14 minus 1, 13, 14 minus 2, 12, 17 minus 4 is 13, 17 minus 3, 14, 19 minus 2, 17. Done. Now after that, इसका फिलहाल के लिए काम हो गया. तो इसे रोक दो पॉज पे. We now move into the first, which is the total float. What is the total float? It is the difference between either the starts or the finishes. उसके बाद आएगा फ्री फ्लोट. बट फ्री फ्लोट के लिए चाहिए total float, head slack, free float, tail slack, and independent float. Let's start with total float. It is a difference between either the starts or the finishes. Correct? So, या तो इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस. दोनों ले लो, सेम आना चाहिए. 707,927 perfect. 505,835 perfect. 000,550 perfect. 927,1367 perfect. 11,3,8,12,4,8 perfect. 835,13,8,5 perfect. 550,13,13,0. 13,6,7,14,7,7 perfect. 12,4,8,14,6 is also 8. 13,13,17,17 0. 14,7,7,17,10 7 perfect. And lastly 17,17,19,19 0. That is your total float. अब चाहिए फ्री फ्लोट. पर फ्री फ्लोट के लिए मेरे पास होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज हेड स्लैक. हर एक एक्टिविटी पे हेड पे क्या स्लैक है वो होना चाहिए अपने पास. तो आई होप आई राइट इट करेक्टली विदाउट लुकिंग एट ABCD. ए के हेड में 7 का स्लैक है. बी के हेड पे 5 का स्लैक है. सी के हेड पे 0. ई के हेड पे सॉरी डी के हेड पे 7. ABCD. ई के हेड पे 8. एफ के हेड पे 0. जी के हेड पे 0. एच के हेड पे 7. आई के हेड पे 7. जे के हेड ABCD, के आई जे के हेड पे 0. के हेड पे 0. एल के हेड पे 0. करेक्ट. होपफुली करेक्ट. If you want the free float, it is the total float minus the head slack. So 0, 0,
7 and 0. Correct? This is the free float. And then independent float के लिए टेल का स्लैक होना जरूरी है. Let's start with the tail का slack. Again by intuition. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. That's it. Total float, free float, independent float is free float minus the tail slack. 0, 0, 0. अब ये नेगेटिव आता है पर जीरो लिखेंगे, नेगेटिव आता है पर जीरो लिखेंगे, 0, 0, नेगेटिव आता है पर जीरो, बट देन आई टेल यू व्हाट इट मींस आल्सो बाद में. -7 आता है यहाँ, -5 आता है. This is 0, -7. This is A1 minus, so this is 0 लिखेंगे और ये भी आता है -7. Then this is 0, 0 and 0. तो इंडिपेंडेंटली कोई फ्लोट नहीं कर सकता. What does it mean by activities D, E, H, I having a negative float? D, E, H and I. देखो इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या बोलता है, अगर पीछे वाला पुश कर दे और आगे वाला पुश ना करने दे तो क्या होगा. अगर पीछे वाला पुश कर दे तो ये 9th डे पे चालू करेगा, आगे वाला बोलेगा मैं नहीं शिफ्ट कर रहा हूं, मैं 6th डे पे ही चालू कर रहा हूं. अरे ऐसे कैसे, अगर ये 9th डे पे चालू कर रहा है और तू बोल रहा है कि मैं 6th डे पे ही चालू करूंगा, तो मेरे पास मेरा काम तो 4 दिन का है बराबर. तो इफ यू पुश टू योर लेट विच इज द 9th डे एंड आगे वाला अगर मुझे पुश करने ना दे, तो डू यू अग्री दैट 9 and 6 आई एम एज इट इज नेगेटिव 3 days शॉर्ट ऑलरेडी, -3 days हो चुका है. करेक्ट, क्योंकि ये लेट करेगा, ये लेट करने नहीं देगा. उसमें मेरा 4 दिन का काम है, तो उसमें मेरे 4 दिन हटा दो तो -7 days चाहिए मेरे पास. -7 days है नहीं अपने पास. देयर इज नथिंग लाइक -7 विथ ई. -5 दिख रहा था शायद ई का, चेक कर लेते हैं. ये बोलता है मैं 8 पे ही चालू करूंगा, ये बोलता है मैं 4 के पहले, मैं 4 पे ही चालू करूंगा. अब ये बोलता है ये मैं 8 पे खत्म करेगा, ये 4 पे चालू कर देगा. 8 पे खत्म करके ये 4 पे चालू कर रहा है, ये तो मुझसे भी पहले चालू कर रहा है, इससे भी पहले. तो 8 में से ऑलरेडी मेरे पास -4 days कम है, मतलब 4 दिन कम है. अब उसमें एक और डे चाहिए विच इज अनदर -1 विच इज -5. -5 का फ्लोट आता है. दैट इज व्हाट इट मींस बाय एन इंडिपेंडेंट फ्लोट, नेगेटिव इंडिपेंडेंट फ्लोट. नेगेटिव लिखते नहीं है, जीरो ही लिखते हैं. This is it. This is a full-fledged question. Any activity having all zero floats is a critical activity. I'm giving you 2 minutes to write whatever you want to write down. And if you need any help, drop it in the chat box.
sir, will they specify to find? Yes, yes, yes. They will write down the question. They will say find the total float, free float, independent float. Now, previous experience and their questions say that they don't ask you all this for all the activities. लिख क्या देंगे? Find the independent float for F, G, I, K. That's it. So you find all of this, then make a small mini table, और फिर जो मांगा है जिसके लिए एंड जो मांगा है वही एक छोटे से टेबल में लिख के खत्म कर. दैट्स इट. दैट इज ऑल दैट यू डू. बट हाँ, उतने का ही निकालने के लिए यू विल हैव टू फाइंड एवरीथिंग एल्स. ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दे ऑल गो वन आफ्टर अनदर. यू कांट हॉप, स्किप, जंप. बोलो वन इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी स्टिल नीड्स टाइम. एक सेकंड दाखवतो. पण पूर्ण क्वेश्चन बसेल की नाही हा म्हणजे तुमचा स्क्रीनशॉट. मी जरा बाकीच्या गोष्टी क्लिअर करतो. delete and delete. तुम्हाला क्वेश्चन पण हवाय का? गॅन्ट बताता हूँ. बरं, मग एका स्क्रीन ग्रॅब मध्ये नका करू, दोन मध्ये करा. सांगतो. एका स्क्रीन ग्रॅब मध्ये फक्त ह्या दोन गोष्टी घ्या, क्वेश्चन आणि नेटवर्क. बसतंय का? घेतला? Diya, I'm only doing things that are important and most frequently asked. We can't do everything in obviously 6 hours, and that is why I'm not taking up crashing, because up until now at your level it has not been asked. Final में पूछा है, इंटर में crashing पूछा नहीं है. आता एक याचा घ्या, म्हणजे दोन पार्ट मध्ये कव्हर होईल. चलो, one in the chat box if anybody still needs time, or I'm moving on to the next chapter. चलो. Now the next chapter, which is very frequently asked, is maintenance management. उसमें भी there is one very typical question asked, and again वो question भी मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर से ही ले रहा हूँ, क्योंकि पास पेपर्स आप कर चुके हो, मॉड्यूल हम कर चुके हैं. तो एक क्वेश्चन है जो सिमिलर है, तो नया होगा. आई एम होपिंग अलग होगा कुछ, तो वैल्यूज तो एटलीस्ट अलग होंगी. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दैट क्वेश्चन. बहुत टिपिकल इसी फ्रेमवर्क में पूछा जाता है. अ कैब ऑपरेशन कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग the following number of breakdowns for months over the last 2 years in their fleet of cabs. तो cabs हैं जो ब्रेकडाउन हो रही है, एंड उन्होंने डेटा दिखाया, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स एंड द मंथ्स इन विच इट अकर्स. सो ब्रेकडाउन and months. 0, 1, 2, 3, 4 and 2, 8, 10, 3, 1.
What do you want from me? Each breakdown costs the firm an average of 2800. For a cost of 1500 per month, preventive maintenance can be carried out to limit the number of breakdowns to an average of 1 per month. Which policy is suitable to the firm? Very typical, always asked in this and this framework only. पहले तो हमें probability of month निकालनी पड़ेगी. So probability of month, which is total कितने महीने के लिए चल रहा है ये टोटल चल रहा है 2 years बोला है, बराबर ना, 2 years. हाँ, तो 24 महीने होने चाहिए. तो दिस शुड बी अ टोटल ऑफ 24. 10 10 20 प्लस 4 इज 24. करेक्ट. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ निकालने के लिए ये हो जाएगा 2/24, ये हो जाएगा 8/24, ये हो जाएगा 10/24, ये हो जाएगा 3/24, ये हो जाएगा 1/24. डन. Now we are going to do, if X is the number of breakdowns and P is the probability, I'm going to do a PX. 0 हो जाएगा, 8/24, 10 into 2 is 20/24, 3 3s are 9/24, 1 4s are 4/24. अब ये नीचे 24 वैसे ही रहेगा, ऊपर बन जाएगा 28 plus 9 will be 37 plus another 4 will be 41. So 41/24. Question is, how do you read this? क्या multiply किया? Breakdowns with month. So this is 41/24 breakdowns per month. हर महीने का ब्रेकडाउन है ये. तो आपको एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ आ गया, तो हम कॉस्टिंग निकालते हैं. फॉर 1 month it is 41/24 breakdowns per month. So at the cost of 2800 rupees on an average every breakdown ka. So at 2800 per breakdown, it is 41/24 into 2800 rupees per month. So this is going to be 2800 multiplied by 41 and divided by 24. तो हो जाता है 4783.3333. So rupees 4783.33 per month. हर महीना ये खर्चा है. But they are saying for a cost of 1500 per month, preventive maintenance can be done to limit the breakdown to 1 per on an average. So this is cost of cost of breakdown maintenance. अब आता है cost of preventive maintenance पे. So for 1 month, cost of preventive maintenance is rupees 1500 रुपया for the maintenance and 2800 रुपया as usual for the one breakdown, which is a total of 1500 plus 2800, which is 4300.
ये एवरी मंथ 4300 देना पड़ेगा और ये 47,833. तो which policy is suitable to the firm? Word question should have a word answer. The policy of maintenance is more suitable to the firm. Yes, yes, I will give you a break at 11 o'clock on the dot. 11 बजे दे दूंगा. 2 बजे तक है ना लेक्चर? बोलो. Anybody wants to write down anything? ये है सामने. 1 minute. Whatever you want to write down, quick. One in the chat box if anybody still needs time. Can I continue? Last call, one in the chat box if anybody still needs time for anything, or I'll continue. Chalo. In maintenance management, they have started asking a new set of questions, जो अब तक पूछा नहीं था. जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आज तक मेंटेनेंस मैनेजमेंट में वही क्वेश्चन पूछा था. ये कभी क्वेश्चन पूछा गया नहीं था. इट्स अ लिटिल टीडियस. इज आस्क्ड फॉर अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मार्क्स, 9 मार्क. एंड इफ यू वेरी ऑनेस्टली आस्क मी,
ये पूछा गया है, पर ये ओल्ड सिलेबस में पूछा गया है, न्यू सिलेबस में पूछा नहीं गया. But then if they are of the mood now to ask stuff that has not been asked before, so we need to know what it is that needs to be done, or how does one solve these kind of questions. So to begin with, और मैंने ये उठाया है from the past attempt paper only. The management of green in hotel is considered the periodic replacement of light bulbs fitted in its room. There are 500 rooms in the hotel and each room has 6 bulbs. The management of green in hotel is now following a policy of replacing the bulbs only when they fail at a total cost of rupees 30 per bulb. The management feels that this cost can be reduced to 10 by adopting a periodic replacement method. The following mortality rates have been observed for the said light bulbs. Months in use, 1, 2, 3, 4, 5. Probability of the bulb failing by the end of the month. 10%, 15%, 25%, 30% and 20%. 100% हो जाना चाहिए. Assume that the bulbs that fail during the month are replaced just before the end of that month. Compute the cost in rupees of individual replacement of the bulb per month. Present the optimal replacement cycle under group replacement policy. State the best strategy for management of green in hotel to follow. Present your calculation to the nearest integer. तो decimal में रखने की जरूरत नहीं है, integer में shift कर दोगे तो चलेगा. Now what is this? This is the second kind of a question जो maintenance management में था. What does the question say? कि आप फिलहाल क्या कर रहे हो? 500 room, every room has 6 bulbs. 500 rooms, 6 bulbs, every room is going to be 6 5 30, 3000 bulbs. अब आप फिलहाल क्या कर रहे हो? बल्ब जब और जैसे खराब होता है तब और तभी ही चेंज किया जाता है. अगर बल्ब खराब नहीं हुआ है तो वो चेंज किया नहीं जाता. इज द पॉलिसी दैट यू आर करेंटली यूजिंग. अब होता क्या उसकी वजह से? पहले पहले ना कम बल्ब खराब होते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब इतने बल्ब खराब होते हैं, 30% बल्ब. तो लुक एट द कॉस्टिंग. 3000 का 30% is 3 3s are 9, is going to be roughly 900 bulbs. करेक्ट. जब 900 बल्ब आप 30 रुपए के हिसाब से चेंज करते हो ना, तो कितना पैसा देना पड़ता है पता है? 9 3s is 27 and 1 2 3, 27,000 रुपए देना पड़ता है. वही एट ₹10 पर बल्ब. करेक्ट. अगर आप सब बल्ब चेंज कर दो तो 3000 इंटू 10 विच इज 30,000. 30,000 में आप सब बल्ब चेंज कर सकते हो. अगर 30,000 में सब बल्ब चेंज कर सकते हो तो आप सिर्फ 30 बल्ब क्यों चेंज कर रहे हो ना? और आप सिर्फ 900 बल्ब क्यों चेंज कर रहे हो ना? चेंज एवरीथिंग. इफ इन अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉस्ट यू कैन चेंज एवरीथिंग. So that is what they are asking. They are asking you, okay, what should be my replacement policy? So to begin with, number one, we have to find out the average number of bulbs that fail per period. A period month hai. Now every month, certain number of bulbs fail. पहले पहले कम, फिर ज्यादा. I want to know average failure क्या है. अब average failure कैसे निकाला जाता है? Average failure के लिए you begin with month. 1 2 3 4 5. Correct. Probability of failure. Probability of failure is 0.10, 0.15, 0.25, 0.30, 0.20. So if this is X and this is P, the first thing that I'm going to do is Px to find the average number of failures. So this is going to be 0.1, 15 2s is 30,
0.75, 3 4s are 12, 5 2s are 10. The total is 0.1 plus 0.3 plus 0.75 plus 1.2 plus 1 is 3.35. The question is, how do you read this 3.35? That answers that will be given to you by आप multiply क्या करते हो. That question will be answered by multiply क्या किया है. Month को failure से multiply किया है. अगर month को failure से multiply किया है, then this is 3.35 months per failure. अरे पर मुझे मंथ्स पर फेलियर नहीं चाहिए, मुझे एक महीने का फेलियर चाहिए. आई वॉन्ट टू नो द फेलियर पर मंथ. इफ यू वॉन्ट टू नो द फेलियर पर मंथ, आई थिंक यहाँ रुक जाता हूँ एंड लेट मी कम टू द टॉप. It is 3.35 months per failure, which is 1 upon 3.35 failures per month. ये एक बल्ब का है. आपके पास है फॉर 500 rooms with 6 bulbs per room. It is 1 upon 3.35 into 500 into 6 failures per month. That is going to be 500 into 6 divided by 3.35 is going to be 895.5 failures per month. अब उन्होंने क्लोजेस्ट इंटीजर में शिफ्ट करने बोला है, तो आई एम गोइंग टू से इट इज 896 फेलियर्स पर मंथ. अगर इतना फेलियर होता है ऑन एन एवरेज पर मंथ, एक फेलियर का 30 रुपया, तो वी आर गोइंग टू से एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30 पर बल्ब. 896 into 30 rupees पर मंथ लगेगा. टू सिक्स एट डबल जीरो 880 पर मंथ लगेगा. Done on an average. Now the other option is present an optimum replacement cycle under group replacement. तो अगर मैं दोनों करना चाहूं कि मैं पहले इंडिविजुअली इवेल्युएट करता हूं, बट बाद में जब ज्यादा फेलियर होंगे तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ग्रुप रिप्लेस कर दूंगा. इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एक एक दो दो बल्ब, मैं सब चेंज कर दूंगा. अब उसके लिए ना हमें नंबर ऑफ फेलियर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे इन अ पर्टिकुलर मंथ, और वो करने के लिए वी नीड एन एक्सटेंडेड टेबल. तो इसमें दो कैलकुलेशंस पैरेलली होंगे. नंबर 1 विल बी नंबर ऑफ फेलियर्स एंड नंबर 2 विल बी कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग टू दैट फेलियर. तो मेरा पहला टेबल इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ फेलियर्स. करेक्ट. मंथ 1. ठीक है.
let's have the table on the right of us for the time being, क्योंकि मैं टेक्निकली करना नहीं चाहिए ये, बट मैं क्या करूँ, कॉस्टिंग पैरेलली करें, फेलियर विद कॉस्टिंग, या सब, क्योंकि 5 ही पीरियड है, तो मैं सोच रहा था लाइन में सब फेलियर निकाल लेते हैं और फिर कॉस्टिंग करते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू, पैरेलली या एक के बाद एक? आप बोलो, वैसे कर देता हूँ। यू वांट टू डू पैरेलल कैलकुलेशंस या पहले फेलियर एंड देन कॉस्ट? ठीक है, आई हैव मोर ऑफ फेलियर एंड देन कॉस्ट, सो लेट्स डू दैट। फेलियर्स, करेक्ट। पहले तो ये लिख लेते हैं कि 500 रूम 6 बल के हिसाब से 3000 होता है। अब इस 3000 में पहले पीरियड में कितने फेल होंगे? 10%, विच इज 3 1 3, 300 बल फेल होंगे सर, करेक्ट। नाउ मंथ नंबर 2, ये जो लास्ट 300 थे ना, ये अब 1 महीना कैरी हुए हैं, और जो उसके पहले वाले 3000 थे ना, वो अब 2 महीना कैरी हुए, बराबर। तो नाउ ये बेटर है। पहला वाला 10% के चांस से फेल होगा, दूसरा वाला 10%, और फिर पहला वाला 15% के चांस से। सो दैट्स गोइंग टू बी इन योर कैलकुलेटर्स 300 into 0.1, add that to memory, and 3000 into 0.15, add that to memory, recall memory, 480 फेलियर होंगे फिर पीरियड नंबर 3। ये 480 एक की प्रोबेबिलिटी से फेल होंगे, फिर 300 दो की प्रोबेबिलिटी से, विच इज 15%, एंड जो 3000 है वो 3 की प्रोबेबिलिटी से फेल होंगे, विच इज 25%। तो टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स विल बी 480 into 0.1, which is 48, add that to memory, 300 into 0.15, which is 45, add that to memory, 3000 into 0.25, add that to memory, recall memory, 843 failures. Fourth wala, 843 will fail with a probability of 0.1. The 480 will fail with a probability of 0.15. The 300 will fail with a probability of 0.25. And lastly, the 3000 will fail with a probability of 0.30. And this will be a total of 843 into 0.1. Add that to memory. Then 480 with a probability of 0.15. Add that to memory. 300 with a probability of 0.25. Add that to memory. And last is 3000 into 0.3. Add that to memory. Recall memory is
11 1131.3 आता है। मैं 1131 ही लिख रहा हूँ बिकॉज दे सेड अप्रोक्सीमेटेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब नेक्स्ट लास्ट, ये 1131 will fail with a probability of 0.1. ये 843 will fail with a probability of 0.15. ये 480 will fail with a probability of 0.25. ये 300 will fail with a probability of 0.3. And lastly 3000 will fail with a probability of 0.20. That is going to be 1131 will fail with a probability of 0.1. Add that to memory. 843 will fail with a probability of 15%. Add that to memory. 480, 25%. 300, 30%. And 3000, 20%. 1049.55। कम आया क्या? ज्यादा ना चाहिए तो ना। यही आता है। हैज एनीबॉडी डन दिस? यही आता है और हैव आई मेड अ मिस्टेक? बराबर। फाइन देन, दिस इज इट। 1050 कर देते इसको, तो ये 1050 हो गया। नंबर ऑफ ब्रेक डाउन, वी कैन स्टार्ट डूइंग द कॉस्टिंग। अपना स्टैंडर्ड टेबल मंथ, 5 महीने तक आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि लास्ट वही है। इनिशियली जो ग्रुप रिप्लेसमेंट में पैसा गया वो, क्योंकि सब एक साथ चेंज कर दोगे। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, cumulative cost of individual replacement, total, and then average. हॉरिजॉन्टल करना है कैलकुलेशन तो बेटर हो जाता है। कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट, अगर आप किधर गए, गया वो, अगर आप 500 रूम 6 बल्ब ईच विच इज 3000 बल्ब ग्रुप में रिप्लेस करते हो तो 30,000 रुपया जाएगा। तो दैट इज ऑलवेज 30,000 रुपीज। सेम कॉपी होगा सब जगह पे, ये चेंज होना नहीं है। डन। Number of breakdowns. Number of breakdowns are 300, 480, 843, 300, 480, 843, 1131, 1050. डन। अब कॉस्ट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट जब करते हो तो 30 रुपए के हिसाब से करते हो, तो 3 3 जा 9,
तो ये हो जाता है 9,000 रुपया। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। क्यूमुलेट करोगे तो 9,000 रुपया, टोटल लोगे तो 39,000, डिवाइड दैट ओवर वन इज 39,000। अब यही कंटिन्यू कर दोगे तो नेक्स्ट पीरियड में 480 इंटू 30 रुपीज, 14,400 प्लस द 30,000, 444, सिमुलेट करना चाहिए था। $9,000 plus 14,400 is 23,400 plus the 30,000, 53,400, divide that over 2 years, 26,700, सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट 843 multiplied by 30 is 25,290 plus the 23,400, 48,690 plus the 30,000, 78,690. Divide that amongst 3 people is 26,230. कम ही हो रहा है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। डबल 131 into 30 is 33,930. Correct? Cumulated with the 48,690, 82,620. Add the 30,000 to it. तो पहले गया वो, so 112,620. Average it for 4 months, 28,155. बोल दो बढ़ रहा है, बंद कर दो। डिक्लेरेशन बताते हैं पहले। अब ये कर ही दिया एक ही महीने का, तो ये एक एक्स्ट्रा खत्म करके कर ही देते हैं। 1050 into 30 is 31,500. 31,500. Cumulate it with the 82,620. 114,120. 114,120. Add the 30 to it. 144,120. Divide that over 5 periods. 28,824. So this is the optimal period for replacement. So जैसा question वैसा answer. The question is, present an optimal replacement cycle under group replacement policy. So group replacement every 3 years है, months है क्या ये डेटा? months है, every 3 है ना, थर्ड मंथ में ही है ना। every 3 months and individual replacement
in between the 3 months as the breakdown occurs is the optimal policy as the cost of this policy is the lowest at rupees 26230 every 3 months. Done? Well, anybody wants to write down, see any part? स्क्रीन ग्राफ्स लेना है तो फिर ले लो, ये पार्ट 1 है. इंडिविजुअल रिप्लेस करोगे तो 26880 पर मंथ लगेगा. अगर वही आप, ये पार्ट 2 है. अगर वही आप इंडिविजुअल रिप्लेस करते हो फॉर एवरी 3 मंथ्स और 3 मंथ्स के बाद ग्रुप रिप्लेस करते हो तो 26 to 30 में हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 600 एंड 50, ₹650 सस्ता पड़ेगा. डन. Fine. So this is it for now. People want a break, so we will go and come back after the break. Now after the break, I will be doing assignment problem, simulation, क्योंकि simulation भी पूछा जाता है, assignment problem पूछा जाता है every alternate year, and forecasting के एक आध questions. So again, topics that have been very prominently asked are the ones that I'm going to take in this. Apart from this, if there is anything else that you want me to take, drop it in the chat box and let me know, and I will accordingly take it. जल्दी बता दो so that I can crunch in the time accordingly. नहीं तो फिर मुझे लगता है मैं वही करते चला जाऊंगा. If there is anything that you need, drop it in the chat box and we'll do it. It is 11:02. I will see you in half an hour. Thank you very much. Bye. और कुछ होगा तो chat box में डालते जाओ.
चलो, I hope you all are back. Now the questions that have been asked. पहले तो बता दो, am I audible? Can you all hear me? Am I audible? Fine. पहले तो the questions that have been asked. Number one, theory questions. Diya, are you still there, Diya? Are you there, Diya? Are you in the meeting? Are you a JKSE student or a non-JKSE student? हाँ, तो I have shared a workbook with you day one when we started the batch, and it will be in your group. उस वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर पैटर्न में क्वेश्चंस लिखे गए हैं. There is too much to do for, I don't know, 6 or 7 marks, which is why I can't run through the theory. That is not something that is possible time wise. So वो वर्कबुक देख लेना. लुक एट द पास्ट. मैंने उसमें आपके साथ जो पास्ट पेपर शेयर किए हैं वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस लिख लो, देख लो क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड देन ट्राई टू डू दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड गो. रीड करो जितना हो सके, आप ये कर पाओगे, लिख पाओगे फिर. LPP, Neha, again, Neha, you are a JKSC or a non-JKSC student? तो नेहा LPP सर्वर पे है. आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ LPP, बट लेटर उस पर ज्यादा ध्यान मत देना. ओनली फॉर्मुलेशन है जो सर्वर पे है, बेसिक फॉर्मुलेशन. FY BCom में किया था आपने, 11th 12th मैथ्स किया है तो किया है, FY BCom में मैथ्स किया है तो तभी भी कर चुके हो. वही LPP कर लेना फिलहाल फॉर द टाइम भी. बाकी डोंट स्ट्रेस ऑन LPP. That's that then. चलो, very quickly let's get back to what we were doing. Now, like I said, I wanted to do one question on assignment problems. Now, I don't know the question that I'm picking up is a question worth picking up or not, but I am picking it up. So this is what it is. Assignment problems. The question says, a supervisor in a workshop is considering how he should assign 4 jobs that are to be performed to 4 of the workers under him. He wants to assign the jobs to the workers such that the aggregate time, aggregate is total of parts, the aggregate time to perform the job is the least. Based on the previous experience, he has the information on the time taken by the 4 workers in performing these jobs, and the same is given below. 4 workers हैं, 4 jobs हैं. Now, technically, these are the kind of questions that are asked. So, देखो, preliminary check करोगे तो, number 1, problem balanced है. Number 2, objective minimization है. क्यों? क्योंकि आपने time दिया और बोला है कि time to perform the job. Next, number 3, is there any prohibition? Mention तो नहीं किया. So, it's a very basic question. My question to you is, are you okay with me doing this, or do you want me to pick up a question that is slightly odd? मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रोहिबिशन है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें व्हाट डू यू से अनबैलेंस्ड है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है. और इज इट ओके इफ आई कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन? वॉट एवर यू टेल मी, आई विल कंटिन्यू.
Fine. Let me quickly pick up a question that I have in one of my sheets. Hmm. This is one of the problems that I have that says solve the assignment problem. At the head office of a company, there are 5 registration counters. 5 persons are available for service. How should the counters be assigned to the person so as to maximize profit? Profit maximize करने बोला है. Now these are counters, counter 1 2 5, and these are the what do they call them? A company has 5 registration counters, 5 persons. So these are the persons A, B, C, D, E. Step 1, let's write down the question. 1, 2, 3, 4, 5, and this is going to be A, B, C, D, E. 30, 40, 40, 25, 29, 37, 24, 32, 38, 62, 40, 27, 33, 40, 41, 28, 21, 30, 36, 34, 40, 36, 35,
36, 39. So that's A, B, C, D, E. Step 1 is done. Question has been copied. We will start with one at a time. I'm going to do the question horizontally. This is the question. Step 1 in solving an assignment problem is a preliminary check. What does a preliminary check do? A preliminary check checks if the given problem has three conditions that apply or not. Number 1, is the problem balanced? There are 5 counters, there are 5 people. The problem is balanced. Question number 2, is the objective to minimize? No, the objective is to maximize. Why? Because they've clearly mentioned that they have given you the maximize profit. Profit दिया तो उसे maximize करना है. तो objective is to maximize. Question number 3, and that is there any prohibition? Well, not that there is any mention. ऐसा कोई prohibition नहीं है. Then we can start solving the problem. Step 1 is going to be changing objective. So step 1, changing objective. Now to change the objective, we are going to copy this as and how it is. After that, we will begin with सबसे ज्यादा maximum profit क्या है? I think the most maximum I see is 62. Correct? So we will subtract 62 from every other profit. So that's going to be 62 becomes 32. Then this will become 22, 22, 62, 25. 37. I'll do it in my calculator. वो बार-बार picking up becomes difficult. 62, 29 is 33. 62, 37 is 25. 62, 24 is 38. 62, 32 is 30. 62, 38 is 24. 0. 22. 62, 27 is 35. 62, 33 is 29. 62, 42 is 22. And 41 is 21. 62, 28 will be 34. 62, 21 is 41. 62, 32 is 32. 62, 36 is 26. 62, 34 is 28. 22, 36, 62 is 26. 62, 35 is 27. 62, 36 is 26. And lastly, 62, 39 is 23. Objective change हो गया. So step 1 is done. Objective is now to minimize. Problem is balanced.
there is no prohibition. We can now move into step 2, and that is row reduction. So we will say step 2, which is going to be row reduction. Row wise. The least you see, I think, is 22. So that's going to be 10, 3, 0, 12, 0, if I'm correct. Correct? Yes. The least that I see here is also 22. So that's 0, 16, 22 is going to be 13, if I'm correct. Then there is going to be 22, 41. 19, if I'm correct. 19. And lastly, 26. 22 will be 4. The least in this row is again 22. So 0, 8, 7, 10, 5. 22, 37, 15, 2, 0, 4, 4. And the least is 0. So no need of subtracting here. 33, 0, 21, 28, 23. Correct? So row reduction is done. We come to step 3, and that is going to be column reduction. Column reduction. कॉलम नंबर 1 में 0 है, 2 में 0 है, 3 में 0 है, 4 में 0 नहीं है, तो कॉलम नंबर 4 को रिड्यूस करना पड़ेगा. The least you see is 4, so 8, 15, 6, 0, 24. Done. Step 1 row reduction, step 2 column reduction, step 3 assignment. Your step 4 will be assignment क्योंकि एक step में हमने objective change किया है. Row wise 2 zeros can't do anything. Exactly 1 0, mark it. Column wala 0, cancel. Done. 2 zeros can't do anything. 1 0, mark it. Column wala 0, cancel. Done, done. 2 zeros. 1 0, mark it. Row wala 0, cancel. Column 1 0, mark it. Row wala 0, cancel. 4 असाइनमेंट बनी है. बननी 5 चाहिए थी. Optimal assignment has not been reached, which means we will have to draw lines. अब lines कैसे draw कर सकते हैं? 3 मेथड है. नंबर 1 is going to be the intuition method. आपको जैसे चाहे वैसे आपको लगता है अरे इस पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, उस पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, आप रो कॉलम वाइज जैसे लाइन ड्रॉ करनी है वैसे ड्रॉ कर लो. मेथड नंबर 2 इज बाय द मेथड ऑफ, आप जैसे जैसे मार्क करके असाइन करते हो ना, आप वैसे ही असाइन करके रो या कॉलम कैंसिल करना चालू कर दो. तो मैं क्या कर देता हूं, पैरेलली दोनों मेथड से अब मे बी सेम निकले, मे बी अलग निकले.
तो यहाँ पे आई एम डूइंग बाय द इसका मेथड विच इज पैरेलल ड्राइंग ऑफ लाइंस एंड बताता हूं, ठीक है। अब क्या है, आपने यहाँ पे असाइनमेंट की, असाइनमेंट नहीं बनी, सो यू मूव्ड ऑन, और आपने वापस असाइनमेंट की, पर इसमें मैं लाइंस ड्रॉ करने वाला हूं। यहाँ पे मैं असाइनमेंट करते करते लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। रो वाइज 2 zeros, रो वाइज एग्जैक्टली 1 0, मार्केट। कॉलम वाला जीरो नहीं, पूरा कॉलम कैंसिल। रो वाइज 2 zeros, रो वाइज 1 0, मार्केट। कॉलम वाला जीरो नहीं, पूरा कॉलम कैंसिल। कॉलम वाइज डन डन डन, 1 0, मार्केट। रो वाइज जीरो नहीं, पूरा रो कैंसिल। कॉलम वाइज 1 0, मार्केट। रो वाइज जीरो नहीं, पूरा रो कैंसिल। सो इन 4 लाइन्स ऑल जीरोस हैव बीन कवर्ड, हो चुका है। The other method is drawing lines by the ticking method. What is the ticking method? Mark a row that does not have an assignment. इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। In the marked row, mark a column that has a zero. यहाँ पे जीरो है, मार्क कर दो इसको, ये हो चुका है। In the marked column, mark a row that has an assignment. ये assignment मार्क कर दो। In the marked row, mark a column that has a zero. There is no zero, done. Draw lines through unmarked rows. ये रो अनमार्क्ड है, ये रो अनमार्क्ड है, और ये रो अनमार्क्ड है, एंड मार्क्ड कॉलम ये वाला। सो रिमेंबर आई टोल्ड यू, कभी कभी सेम लाइन बनती है, कभी कभी अलग बनती है। अब इस केस में अलग बनी, तो अलग मैट्रिक्स कंटिन्यू होगा। अब मैं दोनों नहीं करने वाला हूं, मैं एक ही कर रहा हूं, ये वाला। व्हाट इज द आइडिया? देयर आर टू थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। नंबर वन, आपने जो भी लाइन ड्राइंग की है उससे दो चीजें हो जानी चाहिए। नंबर वन, सब जीरोस कवर हो जाने चाहिए, डन। एंड जितनी असाइनमेंट बनी थी उतनी लाइंस में ये हो जाना चाहिए। कितनी असाइनमेंट बनी थी? 4, तो 4 लाइन में ये हो जाना चाहिए, डन। वी विल नाउ स्टार्ट रिवैम्पिंग द एंटायर मैट्रिक्स। हाउ आर वी गोइंग टू रिवैम्प इट? वेल, जो एलिमेंट्स तीन टाइप के एलिमेंट बने हैं यहाँ पे, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड एंड अनकवर्ड। सिंगल कवर्ड को हाथ नहीं लगाओगे, डबल कवर्ड विच इज जंक्शन एलिमेंट में ऐड होगा क्या? लीस्ट एलिमेंट, और जो अनकवर्ड है उनमें से सबट्रैक्ट होगा। तो पहले तो ये बता दूं कि ये इन सब में से सबट्रैक्ट होगा, बराबर। इनमें ऐड होगा। अब क्या ऐड होगा? व्हाट इज द लीस्ट? द लीस्ट दैट यू सी इन द अनकवर्ड इज 4, तो 4 ऐड होगा। तो 4 ऐड होके ये 10 जंक्शन पे है, तो ये 14 बन जाएगा। फिर ये 15 जंक्शन पे है, ये 19 बन जाएगा। ये 33 जंक्शन पे है, ये 37 बन जाएगा। बाकी कहीं जंक्शन नहीं बना है, मतलब डबल कवर्ड। सिंगल कवर्ड को बाकी हाथ नहीं लगाना है, और ये अनकवर्ड से सबट्रैक्ट करना है। 16 में से 4 निकाल दोगे तो 12, 8 में से 4 4, 12 में से 4 9, 7 में से 4 3, 15 में से 4 11, 6 में से 4 2, 0 एंड 1, डन। एक्चुअली जीरोस को बचा के हमने जो भी ऑल्टरेशंस करनी थी वो कर दी है। स्टेप 6, रीडिजाइनिंग। अब रीडिजाइनिंग के बाद क्या? चेक इफ रो रिडक्शन इज रिक्वायर्ड, चेक इफ कॉलम रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। चेक करने के बाद अगर 99% ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ती, चेक करने के बाद अगर पता चलता है जरूरत नहीं है, देन यू कैन मूव ऑन टू असाइनिंग अगेन। तो रो वाइज 2 0 है, है, कॉलम वाइज है, है, एंड है। तो रो एंड कॉलम वाइज बोथ वेज जीरोस हैं। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप 7, एंड दैट इज असाइनमेंट। लेट्स स्टार्ट असाइनिंग रो वाइज। 2 0 हाथ नहीं लगा सकता, 2 0 हाथ नहीं लगा सकता, 1 0 मार्क कर दो।
कॉलम वाले जीरोस कैंसिल, रो वाइज 2 0, रो वाइज 1 0 मार्क कर दो, कॉलम वाले जीरो कैंसिल, कॉलम वाइज डन डन, 2 0 1 0 मार्क कर दो, रो वाले जीरो कैंसिल, 2 0 हाथ नहीं लगा सकता, रो वाइज 2 0 हाथ नहीं लगा सकता, 1 0 मार्क कर दो, कॉलम वाले जीरोस कैंसिल, 1 0 मार्क कर दो, डन। 5 रो 5 कॉलम, 5 असाइनमेंट बनी है। तो काउंटर एंड पर्सन, काउंटर नंबर पर्सन, 1 2 3 4 5। Counter number 1 will be handled by C, 2 will be handled by E, 3 will be handled by A, 4 will be handled by D, and 5 will be handled by B. प्रॉफिट्स था ना, प्रॉफिट्स। अब याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले मैट्रिक्स से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स से लेना देना है। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, ये जरा कॉपी कर लेता हूं बिकॉज मुझे वैल्यूज इनपुट करनी है। अब उन्हें प्रॉफिट्स को कोई यूनिट्स नहीं दिया, बोला नहीं है रुपीज है या क्या है, तो हम यूनिट्स में ही रखेंगे वट एवर द प्रॉफिट्स इज। ठीक है, तो 1 गोइंग टू सी, 2 गोइंग टू ई, 3 गोइंग टू ए, 4 गोइंग टू डी, एंड 5 गोइंग टू बी। So it is 40, 36, 40, 36, 62. 40, 36, 40, 36, 62 is a total of 214 units. So maximum profit is 214. अज्यूम करोगे अगर रुपीज में है तो रुपीज में। ट्वेंटी फोर यूनिट्स लिख दो, डन, दैट्स इट। बोलो, anybody wants to copy any part of this? आई थिंक 3 3 पार्ट में तोड़ के दिखा सकता हूँ, इफ एनीबडी वांट्स टू सी दिस। बोलो वन इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी वांट्स टू सी एनी पार्ट इन दिस, और मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। वन इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी वांट्स टू सी एनी पार्ट ऑफ दिस। Chinmay has sent me a question from queuing theory. Chinmay, are you there?
Fine. I am going to take a question from queuing theory also. चलो, जो भी लिख रहा था, are you all done? Can I move on? ठीक है. The next topic, which is also asked almost every alternate year, simulation. One question that I'm going to do from simulation, and that is, a retailer is dealing with an FMCG item. The table as given below presents past data of the demand per week in hundreds of kgs with frequency. Using the following sequence of random numbers, generate the demand for the next 10 weeks. Also find the average demand per week. That is all that they want you to do. Generate a demand and find the average. 90% of the time, rather, अब तक यही question पूछा गया है. They ask you to generate and find the average. That's it. ये छोड़ के और कुछ नहीं बोलते. So number one, demand per week. 0, 5, 10, 15, 20, 25. With frequency, three, 7, 5, 11, 18, and 6. Correct? Step 1. We cannot work with frequencies. We need probabilities to work with. So the first thing that I'm going to do is convert the frequency to probability. How? पहले total ले लो. Have they told you कितने के लिए आता है? तो फिर ये cross check करना easy हो जाता है. For the past demand per week नहीं, just weeks दिया है. कितने weeks का नहीं दिया है, तो हमें total करके लेना पड़ेगा. So that is going to be 3 plus 7 plus 5 plus 11 plus 18 plus 6 is a total of 50 weeks का data ये. So when I start dividing, this is going to be 0.06, 0.14, 0.10, 0.22, 0.36, 0.12. Dividing throughout by 50. एक बार चेक कर लो टोटल 1 आता है क्या, मतलब आपका कन्वर्जन बराबर है. 0.06 plus 0.14 plus 0.10 plus 0.22 plus 0.36 plus 0.12 is a total of 1. Perfect. Probability अगर समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो हल्के से पेंसिल से 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दो. अगर वैसा कर दोगे तो थोड़ा आसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 6, दिस इज 14, दिस इज 10, दिस इज 22. या फिर पहले ना एक काम कर दो, क्यूमुलेट कर दो और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो डू अ क्यूम्यूलेटिव probability. 0.06, this is going to be 0.20, 0.30, 0.52, 0.881 multiplied by 100, 6, 20, 30, 52, 88, 100 बनेगी रेंज. रेंज के लिए स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टॉप 1 एलिमेंट बिफोर 5, स्टार्ट फ्रॉम 6, वेट 1 एलिमेंट बिफोर 19, स्टार्ट फ्रॉम 20, वेट 1 एलिमेंट बिफोर 29, start from 30, wait 1 element before 51, start from 52, wait 1 element before 87, start from 88, wait at 99. After that, we go to our prediction. ये बन गया. अब 10 वीक्स के लिए प्रेडिक्ट करके देना उनको. तो वीक ऐसे लिखता हूँ. वीक 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Random numbers are 27, 43, 50, 11, 16, 36, 58, 64, 51, and 38. 38 पे रुक जाना. See what they've done. मांगा कितने के लिए? Predict for the next 10 weeks. बराबर. और दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12 दिए. तो लास्ट का दो मत लेना. 18 and 47. Correct? Let's start the prediction. Demand. 27, 10 का डिमांड. 43, 15 का डिमांड. 50, 15 का डिमांड. 11, 5 का डिमांड. 16, 5 का डिमांड. 36, 15 का डिमांड. 58, 20 का डिमांड. 64, 20 का डिमांड. 51, 15 का डिमांड. एंड लास्टली 38, 15 का डिमांड. टेन प्लस 15 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 is a total of 135. Thank you, dear. Average demand is 135 by 10 per week, which is 13.5. क्या है? This is data is in kgs, hundreds of kgs. In hundreds of kgs, या फिर मल्टीप्लाई करके उसको 135 फिर हो जाएगा ना. This is it. This is what they expect from you in these questions. This is it about simulation. यही expected है आपसे. 2 मिनट दे रहा हूं. Anything that you want to write, and in the meantime, if there is a doubt, throw it in. Quick, we'll move on to the next topic.
चलो, assuming that you all are done. Very quickly then. Another question, and that is forecasting. लूजली देखा जाएगा तो पूछा जाता है, बट आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट पूछा था, तो आपके अटेम्प्ट में पूछने के चांसेस लो हैं, बट नेवर से नेवर. What does the question say? With the help of the data, project the trend of sales for the next 5 years. 120, 130, 135, 140, 150, 165 बढ़ते जा रहा है. एंड ऑन एन एवरेज देखने जाओगे तो 10, 5, 5, 10, 5. तो ओवर 1, 1, 2, 3, 4, 5 periods, you will see an increase of 10, 15, 25, 35, 40. 40 divided by 5 is going to be on an average 8 का increment है. तो 8 से बढ़ते जाना चाहिए. How do we do this? Now there are two methods. There is a direct and an indirect method. 2017 sales are 120, 130, 135, 140, 150, 165. Now, what we have to achieve is a relationship between the year and the sales. Unfortunately, we can't achieve a relationship between the year and the sales. We will consider our sales as X, but we will consider our sales as Y, which we are going to predict, but we can't expect the year to be X, क्योंकि बहुत बड़ी value है. So we will go to the shift and say that हम अपना एक खुद का X बना रहे हैं. और ये X कहाँ से आएगा? ये X आएगा year में से सेंटर सबट्रैक्ट करके. अब है ना, इसका सेंटर कैलकुलेटर में कर दो तो भी, या फिर ऐसे कर दो ना, तो 2019.5 आएगा. अनफॉर्चुनेटली अगर इससे सबट्रैक्ट करूंगा ना, तो मुझे डेसिमल वैल्यूड फिगर्स मिलेंगे. एंड दैट इज व्हाई आई से गलत नहीं होगा, बराबर हो जाएगा, बट देन आई विल से इसको डबल कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, वो डेसिमल वैल्यूड फिगर्स निकल जाएंगे. सो एक्स इज गोइंग टू बी 2 into the year minus 219.5. So we're going to say x is 2019.5 minus 2017. तो कैन आई से नेगेटिव 2.5 आएगा. डबल कर दोगे तो -5 आएगा. वैसे ये -1.5 डबल कर दोगे तो -3. वैसे ही ये नेगेटिव आधा डबल कर दोगे तो -1. ये +1, ये +3 एंड ये +5. This total will be 0, which makes it very easy for us. What does it make it easy for? For the shortcut. What does the shortcut say? The shortcut says y is a plus bx वाला इक्वेशन चाहिए आपको. इसके लिए आपके पास दो इक्वेशन चाहिए. सम ऑफ y is na plus b sum of x, and sum of xy is a sum of x plus b sum of x square. अब होता क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एक्स इज 0, टोटल ऑफ एक्स हैज बिकम 0, तो हम यहां बोलेंगे सिंस सम ऑफ एक्स इज 0, a directly becomes sum of y upon n, and since sum of x is 0, b directly becomes sum of xy upon sum of x square. तो मुझे क्या क्या चाहिए? सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर. तो पहले तो आई नीड एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर. वाई की टोटल y is going to be 120 plus 130 plus 135
plus 140 plus 150 plus 165 is a total of 840. x into y करना पड़ेगा. x into y करने के लिए 120 into 5, subtract that from memory. 600 आता है, but negative आएगा. Next is 130 into 3, subtract that from memory. Negative 390 आएगा. 135 into 1, subtract that from memory. Negative 135 आएगा. ये positive 140 आएगा. 140, add that to memory. 150 into 3, 450, add that to memory. And lastly, 165 into 5, add that to memory, 825. Recall memory, 290. X square is 25, 9, 1, 1, 9, 25. 25 plus 25 is 50, 60, 70. 70 हो जाता है. I have all the values that I need. So I am going to say that sum of y 840, sum of x 0, sum of I'm sorry, my OneNote crashed. Just give me a second. OneNote का स्क्रीन दिख रहा है क्या? Is the screen visible? Perfect. Sum of y 840, sum of x 0, sum of xy 290, sum of x square 70. Let's start substituting. A is sum of y, which is 840, divided by 6. Six ones are 6. 6 fours are 24 if I'm correct. 0. B is sum of xy, which is 290, upon sum of x square, which is 70. So B is 290 divided by 70, which is 4.14. Done. My equation is ready. Y is equal to a plus bx. Y will be 140 plus 4.14 into the value of x. I have the value of y. What do I need now? The projection for the next 5 years. अब 2022 पे रुक गया, 23, 24, 25, 26, 27. But remember कि आपके लिए वो 23, 24, 25 है, मेरे लिए नहीं. Year is not year. Year is changed to x. So I will have to change it to x. Now when that happens, 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो साल भी 2 से होगा. 23 will be 7, 24 will be 8, 25 will be 9 and so on. पर लिख के दिखा देंगे. And that is going to be say for the year 2023, 2022 पे रुके हो ना? Correct. For the year 2023, x is equal to double of the year minus 2019.5. X is 2 times of 2023
minus 2019.5. X is, this will become 3.5 if I'm correct. X is 7. So y is equal to 140 into 7. So y is 4.14 into 7 plus 140, which is 168.98. करेक्ट. नाउ अगले 5 सालों के लिए ये एग्जैक्टली ऐसे ही रिपीट होता जाएगा. फॉर द ईयर 2024 ये बन जाएगा 4.5, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 9. तो ये 2 बार 14.4 से इंक्रीमेंट होगा, तो ये 8.28 से इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 8.28, 177.26. चेक कर लेते हैं. 9 प्लस 140, 177.26. That is for 2004. Then we move on to year number 3, which is 2025. 2025, 5.5, 11, 11 will increase by another 8.28, 185.54. Then we have the year 2026. This is going to be 6.5, 13. 13, this will grow by another 8.28, which will be 193.82. हो गया 4 साल. And we now come to the last year, which is 2027. This will grow by another 8.28, become 202.1. What problem should have our answer? Correct. इसको अच्छे से वर्ड में लिख देना. बोलो. Anybody wants to write down any part of this? Wants to take a screen grab of any part? This is good enough.
Done. Chalo. The next question that I want to do is from queuing theory. Which is this. Is Chinmay in the chat? In the session? No. This is the question that I'm going to do. ताकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं. Workers come to a tool storeroom to inquire about special tools required by them for accomplishing a particular project assigned to them. The average time between two arrivals is 60 seconds, and the arrival is assumed to be Poisson distributed. And the average service time of the tool room attendant is 40 seconds, and they've asked you a certain section of questions. Remember, like we said, हम इसमें से कुछ नहीं करेंगे. हम पहले अपना लैम्डा, अपना म्यू, and then अपना utilization, and then बाकी सब. Till the time we don't have our utilization, हम कुछ नहीं करने वाले. So begin with, first step is find our lambda, find our mu. Now for the lambda is 60 seconds में एक आदमी आता है. Now the problem is कितने सेकंड में कौन आता है, इससे मुझे क्या लेना देना है. मुझे बताओ कि एक घंटे में कितने लोग आते हैं. तो one person arrives in 60 seconds, correct? So arrival, which is lambda persons, arrive in 1 hour. 1 hour, which is 60 minutes, which is 60 seconds. So how many people arrive in 1 into 60 into 60 seconds? So lambda cross multiply is going to be 60 per hour is the arrival rate. Service, which is mu. You can serve one person in 40 seconds. So then you can serve mu persons in 1 hour, which is 60 minutes, which is into 60 seconds, which is going to be mu is 60 into 60 upon 40. I can serve 90 people. Arrival and service मिल गया. This should be big enough. So मैं right color पे लिखता हूँ. Arrival and service हो गया. Let's start with finding row. Rho is lambda upon mu. Rho is 60 by 90. Rho is 6 by 9, which again is 2, 3 2s are 3 3s are 2 by 3. अब कन्वर्ट करना है तो कर दो, इट इज अप टू यू. मैं ऐसे ही रख रहा हूं क्योंकि फिर डेसिमल कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है. No matter what they ask you to find, we are always and always going to start with length of the cube. Rho square upon 1 minus rho. So that is
2 by 3 square upon 1 minus 2 by 3 is the length of the queue, which further becomes length of the queue is 4 by 9 upon 1 by 3. अब ये 3 1s and ये 3s cancel हो जाता है, तो length of the queue becomes 4 by 3. Correct? Let's go to length of the system. Length of the system is queue का length plus that one person that is being served. और वो one पूरा serve नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ row part serve हो रहा है. So the length of the queue is 4 by 3 plus row which is 2 by 3, which is 6 by 3, which is 2. So 2 people in the system, जिसमें से 1.333 part is in the queue and 2.6666 is on the server. LS LQ हो गया. Then we will go for WS and WQ. WS is LS upon lambda. Length of the system is 2. Arrival is happening at a rate of 60 hours. उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मिनट्स, समझने में आसानी हो जाती है. 60 cancels. Waiting in the system is 2 minutes. Waiting in the queue is length of the queue divided by lambda. Waiting in the queue is length of the queue is 4 by 3 upon lambda, which is 60. तो ये hours हो जाएगा. Convert that to minutes. Waiting in the queue is 4 by 3. Multiply that by 60. तो ये minutes हो जाएगा. और आपको डेसिमल में रख के करना है तो आप कर सकते हैं. टेंशन मत लेना कि इतना फ्रैक्शन करने की जरूरत है क्या. 4 by 3 minutes. So waiting in the queue is 1.333 minutes. Done. ये हो गया वेट लेंथ ऑफ द सिस्टम, लेंथ ऑफ द क्यू, वेटिंग इन द सिस्टम, वेटिंग इन द क्यू. अब बताओ आपको क्या चाहिए. एवरेज क्यू लेंथ एल क्यू विच इज 4 by 3. तो इसका आंसर आएगा 4 by 3. एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू दैट वी हैव नॉट फाउंड, निकालते हैं. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम दैट इंक्लूडिंग द वंस दैट आर बीइंग अटेंडेड. तो लेंथ ऑफ द सिस्टम पूछ रहे हो, 2 है लेंथ ऑफ द सिस्टम. मीन वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल, जब एक अराइवल आता है तो कितना वेट करना पड़ता है. अब सवाल ये उठता है कि आने वाला बंदा वेट कहाँ करता है. ऑब्वियसली क्यू में करता है, तो आपको वेटिंग इन द क्यू पूछ रहे हैं, विच इज 1.333 मिनट्स. एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल हु वेट्स. अब ये दो चीजें हमने नहीं निकाली है, बाकी सब हो गया. तो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1 एंड दैट इज नीचे कर देता हूँ. थोड़ा सा राइटिंग ले लेते हैं. Length of a non-empty queue is, anybody? What is the length of a non-empty queue? Queue, क्योंकि they are asking you average length of a non-empty queue. Anyone? Correct. 1 upon 1 minus row. So length of a non-empty queue is
क्या था रो अपना 2/3, 1/1 - 2/3. So length of a non-empty queue is 1/1/3. Length of a non-empty queue is 3. Correct? Ln is mu Wn. So Wn is ln upon mu, which is 3/90 hours, which is 3/90 into 60 minutes, which is 0, 0 cancels, 3 ones are 3 threes are 3 twos are 6, which is 2 minutes. So the answer is 3 and 2, which is average waiting time of an arrival who waits is 2 and length of a non-empty queue is 3. That's it. That covers most of queuing theory questions. They might ask you system ka utilization kya hai? It is rho. They might ask you productivity of your system. That is also rho. और अगर स्क्रीन ग्रैब लेने वाले हो तो एक सेकंड एक और दो चीज पूछ सकते हैं and that is probability of 0 people in the system. It is 1 minus rho, which is 1 minus 2/3, which is 1/3. There is a 1/3 chance that there is nobody in the system. This completely sums up an entire queuing theory question. Fatafat, whatever you want to write, take a screen grab, please do so. Any questions you have, I'm going to wait for a minute, drop them in the chat box.
चलो, this is it then. This covers queuing theory. Now, one section that I want to do a question on is sequencing, and that literally covers a good, at least, if you ask me, a decent 60 plus 70% of the questions that are asked in the exam. ये छोड़ के और कुछ नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है. This is what is expected from you in the exam. That's it. In the meantime, if there is a particular question you want me to take, please drop it in the chat box, and I'll be more than happy to do so. Next concept that I want to cover is sequencing. अब sequencing का question जो last attempt में पूछा है वही ले लेता हूँ. Now, because it has been asked in the last attempt, well, there is a very slim chance of it being asked in your exam, but like I said, never say never. Following table shows the remaining number of days until due date and the work remaining, which is number of days still required to finish work for 5 jobs, ZBA Limited, which were assigned the letters A to E as they arrived to the shop. What do you want me to do? Sequence the jobs according to the priority rules established by first come, first serve, early due date, least slack, shortest processing time, and longest processing time. So we are going to start with job and number of days until due date and time remaining to do the job. A, B, C, D, and E. Due date is 12, 7, 2, 8, 4. Time still required is 13, 9, 5, 4, 1. Correct? First is first come, first serve basis. अगर first sum ABCD 1, 2, 3, 4 है 1 है. अगर first sum first come first serve basis पे पूछोगे तो वही है A, B, C, D, E. The sequence doesn't change. Number 2, it is sequence according to the earliest due date. जिसका ड्यू डेट सबसे पहले उसको C का ड्यू डेट सबसे पहले, C के बाद E, E के बाद B, B के बाद D and D के बाद A. Number 3, least slack. पहले तो slack फाइंड करते हैं. What is slack? Slack is nothing else but the difference between आपका काम कितने दिन का और अभी भी टाइम कितना बाकी है. Like for example, 12 दिन में जॉब ड्यू है एंड 13 दिन का काम बाकी है, मतलब एक दिन कम है आपके पास ऑलरेडी. आज चालू कर दोगे तो भी वो एक दिन लेट ही होना है. So it is the due date minus the duration of that activity. So it is -1, -2, -3, 4 and 3. तो अगर अर्लीस्ट लीस्ट स्लैक के हिसाब से करोगे तो C है, फिर B है, फिर A है, फिर E है एंड देन लास्ट में D है. नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. सबसे शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम किसका है? E का, E के बाद D का, D के बाद C का, C के बाद B का एंड B के बाद A का. लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इसका बराबर उल्टा होगा, which is A, then there will be a B, then there will be a C, then there will be a D, and then there will be an E. That's it. These are the 5 technologies or techniques under which you can queue a given certain job.
जैसे मैंने सुबह पेपर डिस्कस किया, टेक्निकली फॉर द लास्ट अटेम्प्ट्स दैट दे हैव बीन आस्किंग, वो अलग अलग पूछ रहे हैं। अप टिल द लास्ट अटेम्प्ट देयर वाज सेपरेट वन सेपरेट एसन, पर अब इस टाइम वो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर एमक्यूपी रिलीज किया है, जिसमें दोनों एक साथ कर दिया। तो वेरी ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाई दैट न्यू मॉडल पेपर हैज बीन डिक्लेयर्ड, और अगर नया मॉडल पेपर डिक्लेयर किया है देन देयर इज अ चांस दैट मे बी दे वांट टू कंबाइन द टू एंड पुट इट। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स बाइफिकेशन सेम है, दैट हैजंट चेंज्ड, दैट इज व्हाई डजंट मैटर वेरी ऑनेस्टली। व्हाट डज दैट मीन, ऐसा नहीं हुआ है मतलब? सर्वर पे है ना वीडियोस राधिका मिस का? तो वही देख के खत्म कर दो ना, व्हाई यू वेटिंग? थर्ड हो गया है, फोर्थ बाकी है, पर फोर्थ पे ज्यादा स्ट्रेस मत करो, थर्ड तक ही करो, एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स वेरी सुन। व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट दिया? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय फॉर डिस्कस क्वेश्चन पेपर्स। आ जाओ, द नेक्स्ट चैप्टर दैट आई वांट टू डू, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, आई थिंक इन द लास्ट टोटल 6 7 8 9 attempt that we've been discussing papers for, it has been asked, uh, 3 या 4 बार पूछा होगा, लेस देन 50% ऑफ द टाइम्स। बट नाउ व्हाट देव स्टार्टेड डूइंग इज, जो पहले नहीं पूछा था वो पूछते हैं। अभी फिलहाल देव ओनली यूज टू, अप अंटिल नाउ सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पूछा था, अब देव स्टार्टेड आस्किंग वैन एज वेल। सो वन क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डू बाय ऑल 3 मेथड्स, ऑप्टिमैलिटी पे उतना फोकस मत करना, टिल डेट पूछा गया नहीं है एंड इट इज अ टैड हैवी, आई एग्री। बट फाइंडिंग द आईबीएफएस पे प्लीज थोड़ा सा फोकस करना। So finding the IBFS using WAM can be done in 3 methods: northwest corner, least cost cell method, and Vogel's approximation method. We will start with one at a time. Step one, we will start by drawing a table. So fatafat, if you are going to do this with me, table draw kar lo.
My table is almost ready. One, two, three, A, B, C, demand, supply. Seven, two, three, three, one, four, four, three, six, two, three, three, and four, one, three. So this is my question. What does the question say? Obtain the IBFS. बस इतना ही बोला है. We will first start by doing an optimality test. We'll first start by doing a preliminary check. Preliminary check क्या बोलता है? Question number 1. Objective क्या है? Well, आपने लिखा नहीं है, तो I will assume कि minimization है. Question number 2. Is there any prohibition? ऐसा कुछ लिखा नहीं है. Question number 3. Is the problem balanced? Well, if demand meets supply, then it is balanced. 3 plus 3 is 6, 7, 8. 4 plus 4 is 8. So 8 and 8 हो जाता है. Done. What after this? After this, we will start solving the problem. So the first that we are going to do is, we are going to try to find the IBFS using VAM, which is IBFS using the northwest corner method, NWCM. Then we are going to find the IBFS using the least cost cell method. And last will be IBFS using VAM. इसके लिए थोड़ा नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा. Okay, let's start with one at a time. The IBFS using the northwest corner method. अब northwest corner method क्या बोलता है? Northwest corner method बोलता है कि आप नॉर्थ वेस्ट वाला कॉर्नर पहले सिलेक्ट करो. तो नॉर्थ वेस्ट वाला कॉर्नर ये है 7, डिमांड इज 4, सप्लाई इज 2, तो 2 दूंगा, 2 दे दिया, तो 2 2 0 हो जाता है, और ये 4 2 2 हो जाता है. कैन आई से 1 हैज नो मोर? Supply is left. Let's come to the next, which is next northwest corner, 2. 2 and 3, तो 2 दूंगा, 2 2 0 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा. Can I say A has no more demands left? Next, 1 and 1, so 1 0 0. Can I say 2 has no supplies left? And neither does B have any more demands left. And lastly 6, which is 3 3. So 0 and 0. Then can I say 6 will be used? Done. अब इसमें we have to write down the allocations. तो ये यहाँ 2 है, रेड से लिख देता हूँ. ये यहाँ 2 है, उसके नीचे का भी 2 है, ये राइट का 1 है, ये नीचे 3 है.
डन 4 1 3 2 3 3 करेक्ट सो अच्छे से टेबल बना देना फ्रॉम टू नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट फ्रॉम 1 गोइंग टू ए 2 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से 14 फ्रॉम 2 गोइंग टू ए 2 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से 4 फ्रॉम 2 गोइंग टू बी 1 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से 1 एंड फ्रॉम 3 गोइंग टू सी 6 3 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से इज 18 is a total of 14 plus 4 plus 1 plus 18 is 37 rupees. This was IBFS by the northwest corner method. Done. We now move on to the next, which is IBFS using the least cost cell method. Least cost cell method क्या बोला? Least cost वाला cell पहले use करो. अब least cost क्या है? ये 1 है least cost. तो ये पहले यूज कर लो 1 and 3 तो 1 करेक्ट अब 3 में से 1 गया 2 बचा 1 में से 1 गया 0 बचा कैन आई से बी हैज नो मोर डिमांड्स लेफ्ट तो बी रन्स आउट नेक्स्ट लिस्ट इज ये 2 तो ये 2 तो यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो क्या दूंगा 2 दे दूंगा 4 2 2 हो गया 2 2 0 हो गया कैन आई से 2 हैज नो मोर supplies left. Next list is this 3, which is 2 and 3. 2 to 0, 3 to 1. Can I say A has no more demands left? बचा ये 4 and ये 3. तो पहले ये 4 यूज होगा यहाँ 2 दे दूंगा तो ये 2 to 0 हो जाएगा 3 to 1 हो जाएगा एंड लास्टली यहाँ 1 दे दूंगा तो ये 1 1 0 हो जाएगा और ये भी 1 1 0 हो जाएगा 1 runs out and so does 3 and so does C. Done. Let's write down the solution. 1 से 4 2 यूनिट फिर ये 2 यूनिट ये 1 यूनिट नीचे ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट टोटल चेक कर लो 2 3 3 4 1 3 let's give them the cost of this transportation. The cost of this transportation is वन से C बराबर यस 1 से C
2 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 8। 2 से ए 2 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से 4। 2 से बी 1 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से 1। 3 से 3 से ए 2 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से 6। 3 से सी 1 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 6। 6 + 6 इज 12। 12 और 1 13। 12 12 24 25। 25 रुपीज। करेक्ट। करेक्ट। Do you notice the cost is much cheaper as compared to the northwest corner method? And then we come to the last, which is the least cost cell method, which is Vogel's approximation method. Vogel क्या बोला? That do not do this way. Calculate penalties. How do you calculate penalties? The penalty for any row or any column is the least minus the next least value. And after finding penalties, you will then assign in that row or that column which has the most maximum of all the penalties. Done. Let's start with finding penalties. Row wise, least is 3, next least is 4, a penalty of 1. 1 and 2, a penalty of 1. 3 and 4, a penalty of 1. Column wise, 2 and 3, a penalty of 1. 1 and 3, a penalty of 2. 3 and 4, a penalty of 1. The most maximum of all the penalties is this 2. In this 2, I will provide for the 1, which is the least cost. 1 de dunga. 1 1 0. 3 1 2. Again, start calculating penalties. Column wise will not change. Sorry.
this will create an effect that B has no more demands left. So B cancels out. Column wise 1, do not need to calculate 1. Row wise 3, 1, 3. अब 2 3 है. You can pick whichever. ये 3 पिक करूंगा तो ये 4 चूज करूंगा. ये 3 पिक करूंगा तो ये 3. 3 is the cheaper cost. Then select the lower 3. ये 3, 4 and 3 का डिमांड है. Which means 3 दूंगा. 4 में से 3 गया, 1 बचा. 3 में से 3 गया, 0 बचा. Can I say that horizontally 3 has no more supplies left? So 3 runs out of the game. Again, start calculating penalties. 5 dash 1, horizontally 3, 1 and dash. Column wise, the most maximum penalty is 5, which means I will provide for this 2. In this 2, what will I provide? 2 and 1, तो एक ही दूंगा. एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 1. Column wise A has no more demands left. So he runs out. अब टेक्निकली बचे ये 2 ही लोग, तो ये 1 और ये 2 3 हो जाता है. वही कर दो, इधर 1 दे दो, इधर 2 दे दो. तो 1 में से ये 3 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. C has no more demands left and neither does 1 or 2. Done. This is going to be my now we'll have to write down these allocations. Two, 1, 1, 1, 3. टोटल चेक कर लो. 4, 1, 3, 2, 3, 3. Done. Let's start giving them the final allocations. वन टू सी 2 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से सेम ही है. अब 2 से 3 लोगों को जाता है, ए को भी, बी को भी एंड सी को भी, तो वो चेंज हो जाएगा. 2 से ए, वन से सी 2 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से. 2 से ए, 2 से बी एंड 2 से सी. तीनों में एक 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 यूनिट. इसमें एक यूनिट 2 रुपए के हिसाब से, इसमें एक और इसमें 3. इज द टोटल ऑफ 2, 1 एंड 3. एंड लास्टली 3 से ए 3 यूनिट. 3 से ए 3 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से 9. इज द टोटल ऑफ 23, which is cheaper than least cost and Vogels. This is it. These are your solutions. यहाँ पे चाहिए तो लिख दो that this is IBFS using
This is IBFS using. Done. This is it. This covers pretty much everything about transportation. 2 minute दे रहा हूँ. Whatever you want to pick fast. बोलो ना. One in the chat box if anybody still needs to write anything down. And so this is pretty much it. Is there anything anyone wants me to do? सर ये क्वेश्चन करके दे दो सर, इसमें डाउट है. हाँ टेलीग्राम कर दो. हाँ पेपर का है तो भी भेज दो, बट अगर इफ यू कैन टेलीग्राम द स्क्रीन ग्रैब दैट विल बी बेटर. तो मुझे पेपर ढूंढते बैठने की जरूरत नहीं है फिर. जस्ट अ सेक. It is a queuing theory question that has been asked. 2016 के सिलेबस का है, बट पेपर कौन सा है पता नहीं. Very quickly then, the counter of a ration shop experiences an arrival of 25 customers during peak working hours. तो आपको लैम्डा सीधा दे दिया है, and that is lambda is 25. Correct? Service time will have Poisson distribution. Experience suggests that the mean time should average between 2 minutes per customer. Service they have not given to you at a rate. Service, just 1 second. सर्विस का रेट नहीं दिया है. व्हाट इज गिवन टू यू अबाउट द सर्विस इज दैट सर्विस को कितना टाइम लगता है, विच इज 2 minutes per customer. नहीं चलेगा. आई नीड एन आर्ली रेट ऑफ सर्विस. सो आई एम गोइंग टू से 1 customer in 2 minutes. Therefore, new customers in 60 minutes, and therefore mu is 30 customers per hour. Lambda is 25 per hour. Lambda आ गया, mu आ गया. What do you want? Determine each of the following. वही सब पूछा है. तो what we will first start doing is अपनी 4 चीजें निकाल लेते हैं. पहले 5 टेक्निकली पहले रो निकालना पड़ेगा. So rho is going to be lambda upon mu.
रो इज गोइंग टू बी 25/30. अगेन 30 है तो कैंसलेशन वियर्ड हो जाता है. आई एम कीपिंग इट लाइक दैट. आपके ऊपर है. 5 5 जा 5 6 जा. So rho is 5/6. So agar rho is 5/6, then I'm going to say that uh, length of the Q is rho square upon 1 minus rho. So length of the Q is rho square, which is 5/6 ka square upon 1 minus 5/6. Length of the Q is 25/36 upon 6 minus 1, 5, 1/6. तो ये 6 और 36 कैंसिल होता है. 6 1 जा 6 6 जा. This becomes length of the Q is 25/6. Correct? We then move on to length of the system. Length of the system is length of the Q plus rho, which is 25/6 plus 5/6, which is 30/6, which is 5, is the length of the Q. Sorry, length of the system. Then we go to weighting in the system. Weighting in the system is length of the system divided by lambda. Waiting time in the system is length of the system is 5 and arrival is happening at 25. So waiting in the system is, and this is in hours, waiting in the system is 5/25. So 5 divided by 25 perfectly divide होता है 0.2 hours. 0.2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो. 6 2 12, 12 मिनट होते हैं. तो अगर आप सिस्टम में 12 मिनट हो एंड आपको सर्विस 2 मिनट में मिल रही है, मतलब आप 10 मिनट वेट कर रहे हो इन द सिस्टम. सो वेटिंग, सॉरी 10 मिनट वेट कर रहे हो इन द क्यू. वेटिंग इन द क्यू इज लेंथ ऑफ द क्यू अपॉन लैम्डा. वेटिंग इन द क्यू इज लेंथ ऑफ द क्यू इज length of the queue is 25/6 upon lambda is 25. Waiting in the queue is 1/6 hours. Waiting in the queue is 1/6 into 60 minutes. Waiting in the queue is 10 minutes. Done. Now let's answer whatever they want. What do they want? Number one, system utilization. Rho is the system utilization, which is 5/6. अब 5/6 को convert करना पड़ेगा. 5/6 will be 0.833333. Percentage of the time the server is idle, वो निकाला नहीं है. That's basically 1 minus rho. So probability of 0 people in the system is 1 minus rho. 1 minus 5/6, which is 1/6. And what is 1/6? 0.16666. Is the probability of 0 people in the system is 16.67%. Next, expected number of customers waiting to be served. Customers that are waiting to be served. तो फिर क्यू में वेट कर रहे हैं, which is 25/6. And 25/6 is going to be, sorry, 4.16666. And lastly, the average time a customer will spend in the system. पूरे सिस्टम में कस्टमर को कितना टाइम लगेगा? सो वेटिंग WS 12 मिनट, 12 minutes. That's it.
आशु, ये आपने क्वेश्चन भेजा है, क्या डाउट है? ये तो किया सुबह, क्या डाउट है इसमें? वी डिड द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आज सुबह। सेकंड और थर्ड पार्ट तो किया। किसका क्वेश्चन? एक मिनट, हाँ, किसका क्वेश्चन देखना है आपको? ये क्यूइंग वाला क्वेश्चन देखना है जिसने भी भेजा है वो? ये वाला क्वेश्चन देखना है? ये देख लो पहले। हो गया? ये क्वेश्चन आज सुबह कर दिया आशु। आप नहीं थे क्या सुबह? आई स्टार्टेड ऑफ विथ दिस, so I started with this question. कोई बात नहीं। So this is it. All the questions that I want to do, everything that I wanted to discuss is done. अब बताओ, we still have another half an hour. Anybody wants me to do anything specific? तब तक मैं भी एक रन थ्रू कर लेता हूँ. Is there anything that I am missing out on? आपका कुछ होगा तो बता दीजिए या भेज दीजिए. कौन सा? वो मशीन रिप्लेसमेंट वाला? लास्ट अटेम्प्ट पूछा था एक, वही वाला. एक सेकंड देखने दो. Is this the one that you're talking about? हम्म. ये हमने क्लासरूम में थोड़े एक्स्ट्रा वाले किए थे. करेक्ट. आ जाओ, है टाइम तो कर देते हैं. इन द मीन टाइम, एनीबडी एनीथिंग एल्स, प्लीज drop that in the chat box and I can quickly take it, whatever time we have left. Annex Limited, a engineering firm, is using a machine whose purchase price, ये भी दो तीन बार पूछा गया है, whose purchase price is 13,000. The installation charges amount to 3,700 and the machine has a scrap value of 1,400 only. Because of this, the firm has a monopoly of this kind of work. The maintenance cost in the various years is shown below. तो आपको दिया क्या है? Year 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। आपको बेसिकली पूछा जाता है कि मशीन कब ऑप्टिमली ड्यू है रिप्लेसमेंट के लिए। दिस इज रनिंग कॉस्ट 300, 850, 1300, 1900, 2600, 3300, 4200, 6000 एंड 7500। डन। इसको पहले क्यूमुलेट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव रन कॉस्ट 300, 300 plus 8 50 is 1150 plus 1300 is 2450 plus 1900 is 4350 plus 6950 plus 10250 plus 14450 2450 27950। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन पड़ी कितने में? आपको 13,000 प्लस अनदर 1400, सो 14400। नहीं, एक मिनट, 3700, सॉरी। सो दैट्स 13 प्लस 37, सो 16700। ये सब सेम ही रहेगा थ्रू आउट। डन। कर रहा हूं। रीसेल विच इज स्क्रैप 1400 थ्रू आउट। इट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप। डूबा कितना पैसा? सेम ही रहेगा थ्रू आउट। 16700 माइनस 1400 विच इज लास्टली अब टोटल, और उस टोटल का एवरेज। सो 15300 प्लस 300, 15600 एवरेज 15600, 15300 प्लस 1150, 16450,
16,450 total. Averages 82250. 15300 plus, sorry, 2450 17,750. Divide that by 3. 5916777. So 5916 point 5916.67. Then this is 15300 plus 4 साल का 4350 divide that 19650 19650 19650 averages 4912.5. Then it is 15300 plus 5 साल का 6950 22,250 22,250 averages 4490 4450 सॉरी अभी भी कमी हो रहा है और 15300 प्लस 10,250 25,550 25,550 442.58.33. नेक्स्ट अभी भी कम हो रहा है 15300 प्लस 14450 29,750 29,750 4250 on the dot again. अभी भी कम ही हो रहा है 15300 प्लस 20450 35,750 divided by 8. 35,750 divided by 8 is 4468.5. Increase हो रहा है. That is it then. This is where we will stop and we will sell the machine and buy a new one. अब एक ही कैलकुलेशन बचा है तो वो भी कर देता हूँ. Plus 27950. Divide that amongst 9 people. Oh, sorry. Multiply that by 9 and you will get 43,250. 43,250. 43,250. 4805.33. Anyway, it's an increase, so it doesn't matter. This is it. Whoever had asked, screen grab चाहिए तो screen grab ले लो, लिखना है तो लिख लो. बोलो, anyone, any more questions? Anything anybody wants to ask, tell, say? कोई doubt है? Screen grab लेके chat box में छोड़ दो.
स्क्रीन ग्रैब भेज दो, स्क्रीन ग्रैब भेज दो, बिकम्स इजियर फॉर मी एंड फॉर यू. हाँ, ये मॉड्यूल वाला वो टीवी वाला है. और कोई एक एग्जाम में पूछा था, वो ए कंपोनेंट टेस्टिंग वाला था. व्हाट डू यू वांट मी टू डू? हाँ, तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी कौन से पेपर में मुझे पता नहीं. कैन समबडी चेक वो अपने पास पेपर एनालिसिस में कि वो इसका क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा था? टेस्टिंग वाला. मिल गया. एक सेकंड में बताता हूँ. पेपर बताता हूँ, आप ढूंढ लो बाद में. इट इज इन द जून 19 पेपर. करेक्ट. टीवी वाला नहीं है ये, कोई ए कंपोनेंट वाला है, जून 19 वाला. अब टीवी वाला बुक में है, जो बुक वाला है वो टीवी वाला है. मैंने पीडीएफ में ढूंढा है डाउनलोड करके, क्योंकि इसमें सर्च कर सकते हैं. फटाफट कर देता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला है. द क्वेश्चन सेज, आ जाओ. An electronic device component manufacturing company carries out A components testing for 2,500 hours. A sample of 100 A components was put through a quality test, during which two components failed. If average usage of the electronic device by a customer is 5 hours per day, and if 12,000 such devices were sold, then in 1 year, how many A components were expected to fail, and what is the mean time between failure? It's exactly and literally the same. और ये B है, मतलब 6 मार्क के लिए पूछा है. तो आई थिंक 3-3 मार्क ईच. नंबर वन इज कितने कंपोनेंट फेल होंगे उसके लिए 3 मार्क, एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर के लिए 3 मार्क. ऐसे 3-3 करके 6 मार्क दिए जाएंगे. सो टू स्टार्ट विथ, an electronic device component manufacturing company carries out a component testing for 2,000 hours. So is one component is tested for 2,500 hours. 100 components are tested for 2,500 into 100, which is 25, 1, 2, 3, 4, which is 2,50,000 hours के लिए टेस्टिंग होता है. करेक्ट. Since two components failed the test, therefore successful testing was done.
फॉर 2,50,000 -2 इंटू 2,500 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। क्यों? वेल, दो कंपोनेंट का टेस्टिंग टाइम निकालना पड़ेगा, बट दो कंपोनेंट का पूरा टेस्टिंग टाइम नहीं निकालेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो आधे टाइम चले थे, आधे टाइम नहीं चले थे। सो फाइनल बिल भी क्या होगा? 2,50,000 माइनस 2,500, 247,500। आवर्स। अब बोलो, दैट इन 2,47,500 आवर्स, 2 ट्यूब्स फेल्ड। इसे ऐसे ही रखते हैं। आपने बेचे कितने? यू सोल्ड 12,000 सच आर्टिकल्स। रोज 5 घंटा चलते हैं, एंड आपने पूछा है कि एक्सपेक्टेड एक साल में कितने फेल होंगे, बराबर। 12,000 डिवाइसेस ओवर 365 days for 5 hours per day is 12,000,000 into 365 into 5 hours, which is 12,000,000 into 365 into 5 is 219,000,000 hours. It's 2 crore 19 lakh hours. Correct? And now we can come back to in. Two lakh 47 hours, 2 tubes fail. Therefore, in 2 crore 19 lakh hours, X tubes fail. So we're going to say X is 2 into 2 lakh 19, the whole divided by हो रहा है डिवाइडेड बाय 2,47,500। तो ये हो जाएगा इंटू 2 divided by 2,47,500, which is correct, 176.97, which is approximately 177 failures per year. तो एक साल में इतने ट्यूब्स रिटर्न आने के चांसेस, एंड व्हाट इज द मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब दो फेलियर के बीच कितना टाइम है? वेल, in 2,47 hours, 2 tubes fail. Therefore, mean time between failure is 247,500.
divided by 2 hours per failure. बहुत हैंग हो रहा है ये, which is कितना था? 123750. थैंक यू. 123750 आवर्स पर फेलियर. अब उनको इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि डेटा उनका ईयर्स में है, विच इज 123750 डिवाइडेड बाय 5 डेज पर फेलियर. डिवाइड दैट बाय 5. 123750 डिवाइडेड बाय 5. 25150. करेक्ट. कैसे 25150 आया मुझे? मैंने गलत किया क्या? 123750 divided by 5. Correct. 24750 days for failure and divide that by 365 for failure. 67.81. Done. जिसने भी मांगा था. This is the solution. बोलो, anyone, anything else? So 5 मिनट है. If there is anything else, please drop. Till then, मैं थोड़ी सी बकवास कर लेता हूँ. If you've done this much, whatever I've discussed today, अगर इतना आता है आपको, then you have done the basic average. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इसी में से कुछ ना कुछ आएगा तो पेपर लिख तो पाओगे ही. बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू क्रॉस दैट मार्क, यू वांट द कट अबव द रेस्ट, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. मीनिंग यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल बिट ऑन एमसीक्यूज. जो मैंने एमसीक्यू शेयर शीट शेयर की है वो ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स. एंड यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल बिट ऑन द थियोरी. थियोरी में रीड करो, लर्न करने मत जाओ. डोंट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन रट्टोफाइंग थियोरी, क्योंकि उतनी एफर्ट में अगर वापस क्वेश्चंस एक बार रिपीट कर लोगे तो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे. थ्योरी आएगी सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 मार्क के लिए. उसके लिए हाउ मच एफर्ट यू विल पुट इन, यू नीड टू जज. तो ज्यादा एक्स्ट्रा करने मत जाओ. फालतू में वही टाइम अगर यहाँ डाल दोगे सम्स में तो बेटर हो जाएगा. एनीवे, हैविंग सेड दैट, वर्कबुक रीड करो, लर्न मत करना. रीड एज मच एज यू कैन एंड यू विल हैव अ बेटर ग्रिप अबाउट द थियोरी. अगर कोई क्वेश्चन आया थियोरी वाला तो ओन वर्ड्स में लिख ही सकते हो. यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. हैविंग सेड दैट, एमसीक्यूज ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने शीट दी है उसी में से करो. जो भी आएगा उसी में से आएगा. इफ नॉट 100%, a good 70 to 80% will be covered from that sheet and from that sheet only. अगर थियरी क्वेश्चंस की बात करो तो वो भी जो भी आने हैं वो भी उसी में से आने वाले हैं. एंड yes, that is pretty much about it. बोलो, anybody wants to ask anything, say anything, now would be a good time.
ठीक है, fine then. I'm going to wait for another minute or two. If people are done and they want to drop out, please feel free to drop out. Thank you very much. I'm here for another 2 minutes. If there is still any question that you want to ask, please drop it in the chat box. If not, then I will also log out if everybody does. Thank you very much and bye. Bye. Bye, Dia. Thank you. Bye. Bye, Siddhi. Bye.